Nevertheless, we are live on Zoom. Right. Before I start in, just wanted to check whether my audio and video is clear. Right. If you are connected on a Zoom, you can just write clear in the chat box. Right. If you could see me out. People, those are on YouTube, YouTube की जनता, can you hear me out? Is my audio video clear? Right. जल्दी जल्दी सभी confirmation लगा दीजिए chat box पे. It's a live interesting session out and it is first session. Right. Pratham ji looks like very excited. Right. After carrying the loads of bag टू द आईबीएस पेपर ऐसे ऐसे कंधे पे राइट जिसका ग्राउंड फ्लोर पे क्लासरूम था ही वाज रियली हैप्पी बिकॉज ही डोंट नीड टू कैरी अ सूटकेस टू द सेकंड फ्लोर राइट देयर वाज अ गाय और पूनम तो बेचारी सेकंड फ्लोर उसको मिल गया तो वो सेकंड फ्लोर तक बैग उठा के ले जा रही है हाँ पूनम right so there were different stories out different things that happened in the past but nevertheless the journey is completed right and the finally every one of you are here राइट फर्स्ट फ्लोर पे था ठीक है अंजलि जायसवाल कह रही मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था चलो ग्रेट nevertheless that journey is completed right and we are moving to the next step of our journey which is relating to understanding what is needed in market what is something which we are going to be doing so the today's session is approximately 1 to 1.5 hour of a session, but it's going to be very productive and very value-adding session for you guys, right? And definitely, I want you to take a lot of things out. So I would request, फटाफट, bring your pen and paper, right? जाइए pen paper लेके आइए, right? And sit in the session. The students, those who are connected on Zoom, it's a request for you guys to keep your videos on. For the people, those who are connected on YouTube live, आप वीडियो तो ऑन नहीं कर सकते, but I want your participation on the live chat which is there. राइट फटाफट जाइए अरे पेन पेपर लेके आइए निशी कह रही है सर मैं सीए फाइनल की ऑडिट की किताब के 10 पेज बचे थे वो यूज कर लूं अरे आपकी मर्जी संभाल के रखिएगा बस राइट जल्दी जल्दी जाइए ठीक है चलो ग्रेट आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस आर कैरिंग पेन एंड पेपर ओके चलो तो लेट मी स्टार्ट विद वेरी इंटरेस्टिंग थिंग and just a small survey which I wanted to do before the start of a session which is regarding knowing you guys in a nice way. Okay. But just a second. So, what I would request all of you guys is to come to slido.com, put a code 504609, or you can also scan this out, right? Fatafat jaiye slido.com pe and put a code 504609, right? Or you can also scan this out, right? Google Pay se scan mat karna beta. Okay. Yes, I hope you have reached Lokesh ji. कुछ लोग तो इतने टेंशन में बैठे हैं जैसे बाप रे उन्हें फिर से आईबीएस का पेपर देना है अरे नहीं जी ठीक है रिया आई होप यू हैव रीच्ड थम्स अप इफ यस यू हैव रीच्ड रिया जी रिया 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 स्टिल थिंकिंग ओके रिया प्लीज गो राइट फटाफट पहुंच जाइए गो टू slido.com पुट अ कोड 504609 और यू कैन आल्सो स्कैन इट आउट Okay, let's go to the first very interesting question, and which is what's your energy level today on a scale of 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest. बताइए आपका एनर्जी लेवल कितना है जल्दी जल्दी बताइए those who have not reached out go to slido.com put a code 504609 okay great I could see a mixed variety of people out we have more than 250 or 300 odd people joining in for the session out ठीक है a lot of people are waiting voting 8 or 10 nice okay कुछ लोग का एनर्जी लेवल कम है तो नो प्रॉब्लम यू कैन हैव अ पार्ले जी और हाजमोला दैट माइट हेल्प यू आउट ठीक है चलो फटाफट वोट करेंगे गाइस जल्दी ओके नाइस हैप्पी टू सी यू गाइस आर कैरिंग अ गुड एनर्जी लेवल ओके नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच सिटी टाउन प्लेस यू आर कनेक्टिंग फ्रॉम बताइए जरा यू वांट टू नो कहाँ से हैं विच पार्ट ऑफ कंट्री विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम बेंगलुरु पुणे कोलकाता चेन्नई लुधियाना कानपुर शिमला राजकोट दिल्ली चंडीगढ़ नोएडा फरीदाबाद नवी मुंबई इंदौर बैंगलोर छत्रपति शिवाजी राइट प्रदेश नालायक किसी ने सिर्फ प्रदेश लिख दिया अरे आंध्रा तो लिख देता ठीक है रांची नोएडा ओके गुड़गांव फरीदाबाद राजस्थान Okay, Nepal. So we have people from Nepal as well. Nice. Happy to hear that out. Okay, luckily this time no Ukraine or Russia. Last time I was when I was taking a session, एक बच्चे ने यूक्रेन लिखा, एक ने रशिया लिखा और एक ने पाकिस्तान लिख दिया. I was scared after that, but nevertheless.
We have a decent audience this time. Chalo, bang on, great. So one of the best thing is we have a diversity pan India, and different people are connected from here in this live session. Nice. Okay, very important and interesting question, which is your dream company, right? Rohit ji, dream girl मत लिख देना बेटा. हाँ, dream company. रोहित भट्ट साहब सोच रहे हैं ड्रीम गर्ल पूछते तो अभी बता देता. आ गया. चलो, great. Which is your dream company? Just wanted to know out of curiosity. Okay, Deloitte, Tata, BCG, McKinsey, Zoho, Titan, JP Morgan, Big Four, EY, HUL, uh, आदित्य बिरला ग्रुप. ये सबसे ईमानदार इंसान है, हाई पेइंग. जो पैसा ज्यादा देगी वो मेरी ड्रीम कंपनी बनेगी. ओहो. चलो ठीक है, केपीएमजी. ओके, बेन एंड कंपनी, टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएफसी, टाइटन, रिलायंस, एफपीएनए, नॉट yet डिसाइडेड. हाँ, कहीं तो सीए मॉन्क लिखा हुआ मुझे दिखाई दिया, मजा आ गया वो देख के. वाह. ओके, someone is like प्रैक्टिस करेंगे. नाइस, हैप्पी टू सी दिस आउट. प्यूमा. ओके, ग्रेट. अच्छा, one of the very best thing which I wanted to share out of looking out of this every time I do this out, and one thing which I saw is you whatever companies you have written it out, we have students in all those companies which you can see it out. Okay, so that is one of the greatest thing which you have achieved in the last 5 years, right? Being into this industry for this. Okay. ये थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया, बट डिड यू वॉच भूल भुलैया? ये भूल भुलैया जैसा हो गया. भूल भुलैया 3 कितने लोगों ने देखा भाई? ओके, नहीं देखा. ठीक है. हम सीए वाले हैं भाई. राइट, आफ्टर गिविंग एन एग्जाम्स, राइट, अगेन वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ. बॉस वापस बुला लेता है हमें. ओके, ठीक है. ये टेलीग्राम वाले हैं जो 10% है ना, ये टेलीग्राम वाले हैं. आई नो यू गाइस वेरी वेल. ये टेलीग्राम वाली जनता है जो 10% देखी है. चलो, 9 हो गई. चलो, nevertheless, last question, and that is, what did you do in the last 4 days post exam? क्या किया बताइए? What is the last what are the things you did in the last few days when your exams were over? क्या किया तब से? Relax, chill, movies, time pass. Okay, rest, right? Room cleanup. Oh, क्या बात है? Power BI course, nice. Too much scrolling. Okay. Health treatment. ओ भाई साहब, ये क्या होता है भाई? कार ड्राइव, मूवी, वेब सीरीज, जिम, एआई एंड चैट जीपीटी. ओहो. ये सब है ना, ये सब नालायक लोग टेंशन दे रहे हैं और कुछ नहीं है. ओके. होली ट्रिप, गर्लफ्रेंड को मिलने गया. आ हा हा हा. दिस इज द ऑनेस्ट ट्रूथ. ठीक है. सो या, ओके. चलो, ग्रेट. वेंट टू ऑफिस, बैंगलोर. क्या बात है. चलो, ग्रेट. मजे किए. नाइस, 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 नाइस. So great, guys. I got a decent survey and just wanted to break an ice with you guys. Now let us come to very serious agenda for today's session, and that is, what is something which we should do in this next upcoming days, and how we should plan our career journey ahead. Now, please understand, right? This boils down to everything with which, or with the purpose with which you have started doing a CA. If I ask you guys, why did you started doing a CA, right? There will be two major answers. The first answer is, sir, I started doing CA because there is a respect in the course, but respect का क्या करूं जब तक वहां पे पैसा नहीं है. Right? We started doing a course because we wanted the money. Everybody here did a CA course just one of the purposes to earn a good money out. सही बात है. Sir, 5 साल 4 साल we have invested, we want to earn a money. Right? अब पैसा कमाने के लिए either I can do a job, or either I can do a practice, or either I can do a business, or either I can do some other activities and stuff. Agree? Right. Okay. So practice is something which we'll cover in a separate session. We'll be focusing on what is something which companies will be expecting from me after I qualify, and if I build those skills here in the upcoming days, so that I can leverage and get into best companies of the world. A very simple question. You can just need to answer to me in the chat box and the live chat, the people those who are connected on YouTube Live. Tell me the things which are needed to get into good companies. आपको क्या लगता है कि एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए, few minutes ago you were naming your dream company out, right? आप बोल रहे थे BCG is my dream company, McKinsey is my dream company, Big Four is my dream company, JP Morgan is my dream company. But what the hell that dream company will be requiring from you? अरे बताइए चैट बॉक्स में. We want to read it out, guys. We want to know. Let's start thinking. Okay.
Someone said that a good communication skill is needed. Someone said that confidence is needed. Someone said that referral is needed. Someone says that technical knowledge is needed. Someone says that rank is needed. Okay. Someone says that financial skills is needed. Okay. Good CV is needed. Nice. Right. Nice, nice, nice. Okay. Communication skills is needed. Now, please understand, guys, there are six important skills which are highly relevant whenever, whichever company you're going to be going for an interviews or whichever place you're going to be going for an interviews, right? This six things are going to be a primary focus for any companies which is there. ये primary focus रहेगा. Now, in this session, the agenda of this session is we know these six skills are needed, but in this today's session, I'll teach you how do you enhance all those six skills practically. हम सीखेंगे कि कैसे इसको enhance करें, right? That is the agenda for today's session. Now, first, very, very important thing which you guys need to understand is you need a reference. Please put it out in your head clearly. एक छोटी सी कहानी बताता हूँ. Last month, I was in Dubai, right? I was there for a 3 odd weeks, right? Because there were a lot of my students, those who have got placed, and definitely I wanted to meet them out. Plus, I had some client meetings, and a lot of things were there. But you know what? When I wanted to reach out to a lot of people in global markets or any of the places out, I needed a reference. मेरे को reference के बिना कोई appointment ही नहीं दे रहा था वहाँ पे. Right? I cold messaged them. मैंने उन्हें text किया कि please give me appointment. I am the founder of CMO. किसी ने ignore कर दिया. A lot of people have ignored it. But the time I said that, say for example, this person have referred me, Bhavesh Raichura have referred me to reach out to you. I got a reply within 10 minutes. Right? And this was the same case when I reached out to the chairman of IC of Dubai branch. 10 मिनट में मुझे reply आया जब मैंने reference use किया. आपको भी please understand you will need a one right reference to get into one right companies. This is a fact, guys. Accept it. Again, I'm telling it to you, 80% of the vacancies are filled via references. मानो या ना मानो, right? अच्छा, सर रेफरेंस ले लिया तो जॉब लग जाएगी क्या? नहीं. रेफरेंस will get you an edge. रेफरेंस से एक एज मिलेगी. Once you get your reference, your resume should be very, very strong. Now, let me take a small survey once again. Okay, many of you have almost completed the articleship or in the verge of a completion of your articleship, right? If I ask you, are you interested to pursue your career into the same domain or a same area where you have done your articleship? मान लो मैंने आपको पूछा कि आपने स्टार्ट ऑडिट में आर्टिकलशिप की. अब मैंने आपको पूछा कि भैया स्टार्ट ऑडिट में ही करियर बनाना है क्या आपको? जसप्रीत जी बताइए, क्या आपको स्टार्ट ऑडिट में करियर बनाना है? राइट सर. ये अच्छा, जसप्रीत जी कह रहे हैं भैया आर्टिकलशिप जिस डोमेन में की है उस डोमेन में अपने को काम नहीं करना. हा. ये सब अश्लील ग्रोअर बन रहे हैं, दोगलापन दिखा रहे हैं. ऐसे कैसे होगा? सीवी में सिर्फ लिखा है स्टार्ट ऑडिट और जाना है भैया को आईबी में. सही बात, राइट? जाना है आपको एफडीडी में, जाना है आपको एफपीएनए में, और कुछ लोग को नहीं पता. डोंट वरी, फॉर दैट वी हैव अ सेपरेट सेशन. डोंट वरी. बट द प्रॉब्लम इज दिस, you practically understand this. The day you understand it and the day you start solving this problem out, nothing can stop you to reach out there. Now please understand, if you are interested in whichever domain, कोई दिक्कत नहीं. if I am interested into IB, अपने आप से पूछो कि क्या सीवी में कुछ तो आईबी के रिगार्डिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर. एंड इफ यू डोंट हैव दोस थिंग्स, भैया जॉब कहां से मिलेगी? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? आईबी में नहीं मिलेगी, जिस डोमेन में काम किया उसको मिलेगी. Right? If you're interested to get into FP&A, if you're interested to get into consulting, if you're interested to get into whichever domain, अब बंदा बोलता है मुझे ड्यू डिलिजेंस में जाना है, मैं उसको पूछता हूँ कि what is adjusted EBITDA? He does not know what the hell is adjusted EBITDA. बेटा पहला काम होता है when you go into FDD to calculate an adjusted EBITDA. What is important is this is the time where you are going to be customizing and preparing your resume in a nice. I'll show you some of the resumes which you should be focusing on, and इस तरीके से आपको बनाना है so that you will get it out कि भैया this is something which I wanted to achieve in my career. I had a very good student of mine. Her name is Ritika Sinha. Right? She was my last year November 23. आपकी तरह ही student थी. Right? And she had took a 3 attempts in inter, 3 attempts in a final. But वो बंदी आई, वो बोलती है sir, I am really interested to get into consulting. Tell me what I have to do. I told her 3-4 things which she did it out, and she was again a part of this type of session which was there. And after that is done, she just nailed out, and she is working with a PwC consulting. देखो, please understand, अगर एक चीज समझ लिए ना, one thing is really important is the time.
यू नीड टू लिवरेज दिस टाइम इन नाइस वे. जो लिवरेज करेगा विल गो अहेड, जो नहीं करेगा कोई बात नहीं. राइट. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिकेशन स्किल्स. Now, please understand, every second company or third company will conduct their interviews in English. Haji sir. Many of our are not good at English. Don't worry. This is the time to prepare. This is the time to learn. How do you do it? We'll cover in the session in the upcoming next 30 to 40 minutes. You'll get your answers for all your questions out. Right? So communication skills is very important. And now, few companies like Deloitte USI, they will conduct a version test, which is the English communication test. इफ यू आर टारगेटिंग टू ग्लोबल मार्केट, आप ये मत सोचो कि इंडिया में नौकरी चाहिए. नहीं भाई, इंडिया में जॉब लोगे एवरेज पैकेज 13 का है, ग्लोबल में जॉब लोगे एवरेज पैकेज 26 का है. प्रैक्टिकली समझते हैं चीजों को. राइट. एंड डोंट वरी, इफ यू आर टारगेटिंग ग्लोबल मार्केट्स, yesterday only I have uploaded a very nice video on how to get a job in Dubai. Right. We are trying our best to help you out in the best possible manner. The question is, you should be ready to prepare and run the race. Right. जूता पहनना सिखाएंगे, जूते पहन के तुम्हें दौड़ना. आप समझ लो. Right. Next, very very interesting, academics. Does company shortlist based on academics? हाँ जी सर. Does company shortlist based on attempt? हाँ जी सर. सच है, सुनने की ताकत रखो, बट है फैक्ट है, मार्केट में चलता है. राइट. होगा, बायसनेस क्रिएट होगा, कोई दिक्कत नहीं है. एंड नेक्स्ट, फ्यू कंपनीज विल आल्सो क्रिएट अ बायसनेस बेस्ड ऑन ब्रांड नेम, बेस्ड ऑन योर आर्टिकलशिप एक्सपोजर, बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बेस्ड ऑन योर वर्क डन. राइट. अगर आपने इंडिया का काम नहीं किया तो डेफिनेटली आपका सीवी को एज नहीं मिलेगा. बट एक चीज बता रहा हूँ, गुरु मंत्र, things can be learned, रोने का नहीं. If you can learn those things out and incorporate those things, bang on, nothing like it. Right. Now, let me ask you a few questions. Now, since I have few days left with me till the time results come and till the time I'll be qualified chartered accountant, I have 6 things to work on. Right. Let me think practically for myself, and definitely you can note it down for yourself as well. Within this upcoming days till the time results are out, can I work on this and can I gather some references of some good companies, partners, directors, big fours and all those people out? क्या मैं इस चीज पे काम कर सकता हूँ, हाँ या ना? कैन आई चेंज दिस फॉर माई सेल्फ? यू कैन जस्ट आंसर इट इन द चैट. कैन आई चेंज दिस गाइस? बताइए, क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? बच्चा बोल रहा है हाँ. बच्चा बोल रहा है हाँ. कैन आई अपडेट माई रेज्यूमे? कैन आई स्ट्रेंथन माई रेज्यूमे? कैन आई प्रिपेयर माई रेज्यूमे इनटू अ डोमेन वेयर आई एम इंटरेस्टेड इनटू? क्या मैं रेज्यूमे पे काम कर सकता हूँ अपने? हाँ जी सर. बच्चा बोलता है हाँ. Can I start working on improvising my communication skills? Right? The answer is again yes. Can I change my academics? बताइए, क्या आप अपने एकेडमिक्स को चेंज कर सकते हैं फिर से? रोहित भट्ट कह रहे हैं, मैं तो फिर से जाऊंगा, सीए इंटर दूंगा, सीए फाउंडेशन दूंगा, रैंक लेके आऊंगा. हाँ, बेटा पूरी फीस मैं तुम्हारी स्पॉन्सर करता हूँ. कोई इंटरेस्टेड है फिर से सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल और आईबीएस की किताबें ठेला भर के, ठेला बोल रहा हूँ, सॉरी, थैला भर के ले जाने के लिए? राइट. नो वन इज इंटरेस्टेड. राइट. ठीक है. नो वन इज इंटरेस्टेड. तो एकेडमिक्स तो इल्ले, एकेडमिक्स यू कैन नॉट चेंज. ओके. कैन यू ब्रिंग आउट सम ब्रांड नेम्स इन योर सीवी? क्या सीवी में अभी कुछ ब्रांड नेम्स ला सकता हूँ सर? कैसे लाएंगे? अभी सेशन में कवर करेंगे. अंजलि जी टेंशन न लीजिए, चेहरे पे स्माइल लाइए. हाँ जी. कैन आई चेंज माय आर्टिकलशिप एक्सपोजर? अरे बताइए, कैन यू चेंज योर आर्टिकलशिप एक्सपोजर? हाँ, मैं कहता हूँ हाँ, आर्टिकलशिप एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं. अरे उसे कैसे पता? इंटरव्यूअर को क्या पता कि मैंने क्या किया है? इट्स व्हाट आई शो इन अ रेज्यूमे. राइट. रेज्यूमे एक कागज है, मान लो रेज्यूमे, इस पे जो लिखा है उसको लग रहा है मैंने काम किया, खत्म. आई हैव लर्नड द थिंग्स एंड आई एम सेइंग दैट आई हैव डन इन माय आर्टिकल. ही इज नॉट गोना बी कॉलिंग योर ऑफिस बॉस एंड आस्क कि भैया इसने इंडेक्स के 115 में एडजस्टमेंट एंट्री मारी थी क्या आर्टिकलशिप में? अरे लिखा है मतलब मारी है ना ब्रो. आई हैव रिटन 115, दैट मींस आई हैव डन. सिंपल. अरे दिस इज, देखो, दिस इज यू आर गोइंग टू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. जो दिखता है वो बिकता है. राइट. है ना? तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस थिंग्स कैन बी चेंज्ड. नाउ वन थिंग व्हिच यू कैन नॉट चेंज इज द एकेडमिक्स. नाउ सर, एक चीज समझ में आई. आई हैव टू वर्क ऑन 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स. 5 चीजें चेंज करनी है अपने जीवन में, अपने करियर में. अब सवाल ये आती है, राइट, कि हमारा एक कॉमन गोल था वो क्लियर हो गया, बट नाउ बिगेस्ट थिंग विच इज देयर इज, सर, हाउ मच टाइम आई हैव नाउ? कितना समय है मेरे पास, ये बताइए, ये सब करने के लिए. चल ले, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट देख लेते हैं, तो इससे पता पड़ जाएगा. अयो जी. राइट. रुचिता जी टेंशन में आ रही, बेटा तुम पानी के 2 घुट पी लो या चाय की चुस्कियां मार लो, थोड़ा अच्छा लगेगा. ओके, चलो, नाउ लेट्स सी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट. एवरी अटेम्प्ट आई जस्ट फोरकास्ट दिस आउट एंड मोस्टली इट्स गोना बी ऑन अ सेम लेवल.
राइट, 2 5 4 5 दिन आगे पीछे हो सकती है, बट लेट्स फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स सी हाउ मेनी डेज इज देयर फॉर योर रिजल्ट्स व्हिच इज गोना बी कमिंग. ICAI generally follow a past pattern, right? This is a past pattern which is followed. Exam end 45 डेज उनका टारगेट रहता है, तो 50 डेज में रिजल्ट आया था नवंबर 22 में, 10 जनवरी को रिजल्ट निकाला था, 30 दिन में कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, 30 डेज में कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, तो दिस वाज 10 फरवरी विच वाज इन नवंबर 22. मतलब पैटर्न आप समझिए, राइट? पैटर्न इज वेरी सिंपल. एग्जाम खत्म हुआ, 40 45 डेज में रिजल्ट्स, उसके बाद दे विल हैव अ 30 डेज का टाइम, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ आपके. बट ये कब होता था? पहले, जब 8 पेपर थे, ठीक है, व्हेन देयर यूज्ड टू बी 8 पेपर. मई 23 सेम पैटर्न, 49 34 डेज. में नवंबर का पैटर्न में थोड़ा सा दिक्कत था, बिकॉज अगेन इंटर दिस वाज अ फर्स्ट, सॉरी नवंबर, सॉरी मई में, राइट? मई का अटेम्प्ट में देयर वाज अ ह्यूज गैप, राइट, विच वाज 11th ऑफ जुलाई का रिजल्ट आया था, थोड़ा सा ज्यादा गैप था, विच इज 56 डेज. कैंपस स्टार्टेड इन 37 डेज. बट नाउ ICAI इज वर्किंग ऑन अ फास्टर पैटर्न, राइट? इंटर में इन्होंने मचा दिया इस बार, 37 डेज में रिजल्ट आर आउट. 37 डेज में रिजल्ट आ गए थे सी इंटर के. नाउ बेस्ड ऑन दैट माइलस्टोन एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपेक्टेशन, 42 डेज में फाइनल के रिजल्ट्स विल बी आउट. अप्रोक्सीमेटली योर रिजल्ट्स विल बी आउट बाय दिसंबर एंड, क्रिसमस के दिन के आसपास आएंगे मोस्टली. दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, राइट? कोई कह रहा है इस साल नया साल गया, इंटर वालों की दिवाली खराब की, हमारा नया साल. अरे तुम सोचो, तुम पास हो रहे हो. देखो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू आर सिटिंग हियर दैट मींस यू आर अ सीरियस पीपल. जिसको घूमना था वो तो गेड़ी मारने गया भाई. सिंपल सी बात है ना. मुझे मेरे मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, राइट? तो दैट इज व्हाई यू, I'm expecting somewhere around 25th of December will be your results, and 30 days में campus start होगा, which is 24th of January 2025. ठीक है, so that is what I'm expecting, right? डरे नहीं, but again this is expected. Let us calculate practically. 42 days है आपके पास, right? 42 में से भी आप 4 माइनस कर दो या 5 माइनस कर दो, तो you're left with somewhere around 35 odd days for preparing yourself. इसमें भी अभी काफी सारी कंपनीज के प्री रिजल्ट ड्राइव आ गए हैं, राइट? विच इज गोना बी इन समवेयर अराउंड 15th और 16th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे. डेलोइट यूएसए विल स्टार्ट, राइट? बिकॉज आई ऑलरेडी इन टच विद एचआर. डेलोइट यूएसए का आ गया, ग्रैंड थॉर्नटन आ गया, ईवाई स्टार्टिंग हो जाएगा, राइट? तो 15 16th ऑफ दिसंबर से यू विल फाइंड आउट अ प्री रिजल्ट ड्राइव. व्हाट इज प्री रिजल्ट ड्राइव? रिजल्ट आने से पहले की एक ड्राइव हो जाती है, जहां पे वो कैंडिडेट्स को एक कंडीशनल ऑफर दे देते हैं कि इफ यू क्लियर योर रिजल्ट्स यू आर सपोज टू ज्वाइन आवर कंपनी द नेक्स्ट डे और विद इन अ वीक. तो दैट इज गोना बी हैपनिंग. देखो प्लीज, डरने की कोई बात नहीं है. आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर, आई एम मेकिंग यू अवेयर. ठीक है? यस. आई होप टिल नाउ द थिंग्स आर क्लियर विथ यू. देखो, एक लाइफ में ना गोल एंड विजन शुड बी वेरी क्लियर फॉर यू. सिर्फ 5 चीजों पे काम करना है ना? अभी तक के तो क्लियर है, 5 चीजों पे काम करना है. मेरे पास 30 35 और डेज है, राइट? अब कैसे करना है वो सीखते हैं. ओके, नाउ लेट मी जस्ट ओपन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड. ओके, नाउ let me start with the few things which are there. Okay. I hope my second screen is visible to you guys, the another screen. Yes. Okay. चल. The first thing, academics को हम change नहीं कर सकते. Let's start with the first thing, brand names. Now, if you want to change your brand names, right, you can bring out and change your brand names at few places. The first is internships. Now, please understand, अगर आपकी आर्टिकलशिप बहुत अच्छी जगह हुई है, right, if you have done an articleship at a good places or if you have some good brand names. Aditi ji, मान लो कि if you have worked with some of the listed clients or if you have some worked with the greater areas or greater places, आपके पास कुछ अच्छी चीजें हैं. But if you don't have some great things out or if you don't have something good in your CV, what I generally recommend to the people out, for 30 45 days or 2 months, right, 2 months के लिए you can take an articleship or internship or a paid assignment at small places where you can try to gain that exposure out. Okay. Either you can easily get it your local CA firm where you did your articleship from, or you can get it on some assignment basis. Or there are a lot of new CAs, those who have started a practice, those who or she needs some help or assignment, तो वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो. काफी सारे लोग हैं जिन्हें जरूरत है, and you can join there and that is going to be helping you to get an edge. Okay, तो वहां पे आप वो चीज आप कर सकते हो. Okay, now next,
Sir, very, very important. I'm not able to decide a domain. What the hell I should do? Nothing to worry as such. 21st of November, we have an event on deciding a domain-wise guidance session. उस दिन आप सहपरिवार आ जाना. सहपरिवार मतलब अपनी बीवी बच्चों को लेके आना. Right, and that day I'll be explaining it to you. How do you decide a domain and which domain you can start your career into? That is on 21st of November. Okay, sir. Second important thing, which is very, very important, and that is I would highly recommend many of you to join some NGOs. The list of NGOs, you can see it out in your screen. Just see and find out a local NGO at your place where you should have one extracurricular activity added in your resume. सूरज जी को अगर मैं पूछता हूँ, बेटा सूरज जी आपके सीए में जब से आप आए हो तो क्या आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं? तो सूरज जी कहते हैं ना जी सर, हम तो सिर्फ सीए फॉर्म में जाते हैं, सुबह आते हैं, सीए फाइनल की क्लासेस करते हैं और सो जाते हैं. राइट, तो अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सीवी में नहीं है, सीवी पूरा खाली है. तो प्लीज ज्वाइन सम एनजीओस, सम गुड एनजीओस वेयर यू शुड फोकस ऑन थ्री थिंग्स. नंबर वन, इम्पैक्ट. इम्पैक्ट का मतलब होता है सर, ट्राई टू शोकेस सम ऑफ द गुड थिंग व्हिच यू कैन ब्रिंग इट आउट. सेकंड, सम लीडरशिप क्वालिटीज जहाँ पे आपने कुछ लीडरशिप दिखाया है. भाई एक दिन भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, एक सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ चाहिए तुमने किया है, बात खत्म. राइट, जो दिखेगा वही दिखेगा, सिंपल सी बात है. राइट, एंड थर्ड, राइट, यू हैव एडेड सम वैल्यू और कंट्रीब्यूटेड समथिंग. राइट, देयर फ्यू क्वेश्चंस दे विल आस्क यू, हाउ डू यू गैदर अ फंड, राइट, हाउ डज एन एनजीओ वर्क. ये सब चीजें बेसिक आपको समझने हैं एक दो एनजीओ के. ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू कैन ज्वाइन. Third, initially you can join some local firms, which I told you about freelancing work. There are a lot of freelancing work which is also available at multiple places. So I'll just show you other play portals also where you can just try to join some freelancing work. Meanwhile I'll just go there, and you can just do some other activities as well. जैसे कि, say for example, this is something many of them have incorporated in their CV, which is one day internship, virtual internship with BCG. कुछ नहीं है, राइट, जस्ट फॉर अ सर्टिफिकेट स्टेक. राइट, ऐसे कुछ ज्यादा वैल्यू एडिंग होगा नहीं, बट बीसीजी इज अगेन अ वेल नोन नेम, तो मेनी पीपल व्हाट दे डू अ वन डे सर्टिफिकेशन इंटर्नशिप एट बीसीजी. राइट, थोड़ा सा बताया कि क्या होता है कंसल्टिंग एंड स्टफ स्टफ स्टफ, एंड आफ्टर दैट इज यू गेट अ स्मॉल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ बीसीजी. ठीक है, वो दिखाने के लिए होता है, बट एक थोड़ा सा एज मिल जाता है कि हाँ चलो इसने कुछ नया सीखा है, और that is something which is there. So I'll just share this link in the chat for the people those are interested. Right. And parallelly, I'm assuming that you guys are making the notes which is there. Or anyways, if you miss out anything, YouTube पे this session is available. ठीक है रंजीत, आप भी YouTube लाइव पे एक बार पॉसिबल होगा तो ये चैट पे जो लिंक्स आ रही हैं वो एक बार दे दीजिएगा, so that people don't miss out the same. ठीक है, so you can join this one day internships which is there, and this is going to be playing an edge. Second is a very interesting thing. There are a lot of simulation games which you can play, which is going to be heading an edge in your CV. जैसे कि just sharing a small example. I'll just show you one of the resume of one of my student. तो जनरली ये सिमुलेशन गेम्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट सर्च करोगे तो मिलेंगे. बट अगेन इट्स योर अप टू योर एपेटाइट, हाउ मच यू आर रेडी टू पे. But let me show you one CV. So this is a CV of one of my student, Ritika. She was our GR batch student, and GR में pre-result में भी generally play a simulation. That is only in a pre-result. तो इन्होंने एक simulation खेला था, marketplace simulation, which helped her to get into consulting. तो simulation क्या होता है? You get a dummy data of a company and you run that business model end to end. Right from starting a venture till completion of a venture. तो इस तरीके से you can just put out some of the good things in your CV. Simulation खेलने से वो एक अच्छा CV standardize हो जाता है, which is there. I can show you a lot of CVs where the simulation is incorporated, which is going to be playing an edge. I'll just show you one more CV where you'll just get an idea of hmm, how does simulation add an edge. Okay. तो ये देखो, इन्होंने भी मार्केट प्लेस सिमुलेशन, विच इज अगेन अ सिमुलेशन विच ही और शी हैव एडेड. जैसे कि सिमुलेशन है, तो सिमुलेशन इस तरीके से डाले हैं इन्होंने सीवी में. राइट, ही वाज अगेन अ जीआर बैच स्टूडेंट. ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन जस्ट ऐड सम सिमुलेशन विच इज देयर, विच इज गोना बी हेल्पिंग यू टू प्ले एन एज, विच इज इंटरेस्टिंग. Third is very interesting. One of the website which can help you to get some certificates with some branded company name is the Forage. I'll just again show you the website, and the link I'll just share in the chat. Uh, yes, I'll just share you the link in the chat. That is third website. Here, if you go, यहाँ पे, if you could see it out, say for example, you can just again some of the job simulations are there. But इसमें, say for example, accounting में if you go, so once you're here, you will find out some of the approved certificate courses by the respective companies. But आपके समझ के लिए कुछ नहीं है.
सिर्फ वो कहते हैं ना कि ब्रांड के लिए है, नाम के लिए, वो टैटू का है, केपीएमजी का फ्री कोर्स है अगेन, राइट, यू कैन जस्ट पुट इट आउट इन योर सीवी इफ यू वांट टू डू। केपीएमजी करियर टैक्सेशन या पीडब्ल्यूसी यूएस ऑडिट का मैंने कोर्स किया है, 3 से 4 घंटे का, बट अगेन इफ यू लाइक इट आउट बैंग ऑन, इफ यू डोंट लाइक इट आउट तो वो ऐसा ही है वो। बट अगेन इट्स मोर ऑफ अ फॉरेन ऑथर कोर्स, तो उतना नहीं जेबता है अपने को। ठीक है, यू कैन जस्ट सी इट आउट, यहाँ से भी आपको काफी सारे थिंग्स यू विल जस्ट ट्राई टू गेट इट आउट ऑन योर जस्ट। ओके, so that is one thing which you can put it out. Next, very interesting. Next is sir internships कैसे ढूंढे? Okay, let me just show it to you few things. There are 2 3 changes which you have to work on your profile and stuff. Once you go to your LinkedIn, right? 2 3 things you need to do. Open to section. यहाँ पे you can click on find a new job. Once you click on find a new job, यहाँ पे आपको मिल जाएगा whatever title you are looking for. यहाँ से आप ढूंढ सकते हो. Say for example, finance. में you are looking to, you can just put it a finance. Right? इसमें on-site, off-site, right? Or if you're looking for any other thing, you can put it out. I'm looking for internship, and if you want to showcase to the world, click here, and then your profile is updated. So that is one thing which you can do it on LinkedIn. I'll just repeat it. I'll just go slow, right? Open to section. Once you are here, find a new job, and once you're here, you can just fill out the basic details here. That is first. Second is the job section, जहाँ से काफी ज्यादा internships भी मिल सकती हैं, और any of the short assignments are there. यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, यहाँ पे विल फाइंड आउट मोर ऑफ अ वेकेंसीज एज यू क्वालिफाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वट एवर वेकेंसी यू वांट इट आउट, राइट, जैसे कि अकाउंटेंट और एनी ऑफ द फाइनेंस रिलेटेड जॉब, यू कैन जस्ट सर्च इट आउट हियर। कुछ ना कुछ मिलेगा, बट अगेन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मिलेगा, इट्स मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म विच इज देयर, विच माइट बी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू क्वालिफाई इट आउट। है ना, अपवर्क इज देयर, इंटर्नशाला इज देयर, राइट, इंटर्नशाला अपवर्क में ज्यादा आपको इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एज कम्पेयर टू दिस। Okay, so this is something which you can try it out, where you can get some good things out, which is there. Now, one very interesting thing which I wanted to show it to you. जैसे आप स्टूडेंट हो अभी, राइट, वैसे एक बंदा था, राइट, अवकाश शाह। ही वॉज अ मोशन ग्राफिक डिजाइनर एट क्रेड, बट बिफोर दैट ही वॉज रियली इंटरेस्टेड टू गेट अ जॉब। बंदे को जॉब चाहिए थी, तो बंदे ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बंदे ने सिर्फ जीवन में 2 लिंक्डइन पोस्ट लिखे हैं। ठीक है, his first LinkedIn post is, I want to intern at Cred, here is my application. Okay, so let's see what his application looks like. ध्यान से देखिएगा। Now, what he has done, please understand, he has just made a small, this is called as a cover letter. Cover letter का मतलब होता है which talks about 3 things: why this industry, why this domain, why you, right? जैसे कि whenever you are going to be applying into a company after you qualify, preferably it is recommended to have a cover letter. मतलब क्या होता है, सब रेज्यूम भेजते हैं, हम रेज्यूम के साथ कवर लेटर भेजते हैं, उससे आपको एक एज मिलता है लोगों से, जहां पे आप बोलते हो कि मेरे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर में जाना है, इसके 4 कारण ये है, और मुझे एफएमसीजी इंडस्ट्री में जाने के ये 4 कारण है, और मैं इस एफएमसीजी में जाने के लिए क्यों अच्छा इंसान हूं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ कवर लेटर इज, दैट इज व्हाट ही हैज मेड। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक अ पम 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 वीडियो, राइट। हरीश हरीश बोलेगा सर ने बोले पम पम बनाने को, बुलाते हैं पम पम, नहीं बेटा, पम पम नहीं बनाना है, राइट। व्हाट आई एम आस्किंग यू एंड टेलिंग यू हियर इज कि जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड का एक नॉलेज और एक्सपर्टाइज रहेगा तो एज मिलता है, सिंपल, राइट। जैसे कि अगेन कमिंग बैक टू दैट सीवी, ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं, राइट। अगेन कमिंग बैक टू द सीवी, जैसे कि मेरे पास मेरी ये बैच की स्टूडेंट थी अगेन रितिका, कुछ नहीं भाई, इसके सीवी देखो, राइट, व्हाट शी हैज डन वेरी स्मार्टली, शी हैज डन इट आउट। कहाँ पे आर्टिकलशिप की है, राइट, आर्टिकलशिप एक मीडियोकर फर्म में, बुटीक फर्म है, बुटीक का मतलब होता है स्मॉल। किस डोमेन में की है सर? डीटी आईडीटी में डोमेन में आर्टिकलशिप की है, ठीक है, राइट। इसके साथ साथ उसके पास एक और चीज था, उसके साथ उसके पास ट्रांसफर भी था, ठीक है। अब इसके साथ साथ उसको अटेम्प्ट्स भी लगे थे, बट द वे शी हैव प्रेजेंटेड इट आउट, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे उसको अटेम्प्ट्स लगे हैं, ठीक है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है सीवी में। ये डाला है उसने, यहाँ पे देखो, सीए फाइनल 23-24 अलग तरीके से लिखा है। दिस इज व्हाट अगेन वी टीच टू आवर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट शी हैव पुट अ कोर्सेस एंड डिटेल्स आउट, कि ज्यादा देखो भाई मैंने कंसल्टिंग में
सर्टिफिकेशन किया है विद सीएमओंग एंड लर्न एक्सवाइजेड थिंग, सिमुलेशन किया है विच हैव लर्न एक्सवाइजेड थिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग किया है जहां पे मैंने एक्सवाइजेड चीजें सीखी, राइट। और बंदी ने फर्स्ट शी गॉट प्लेस्ड इनटू ग्रांड थॉर्ंटन इनटू वैल्यूएशंस। उसके बाद शी गॉट अ ऑफर फ्रॉम अ पीडब्ल्यूसी कंसल्टिंग, वो छोड़ के वो पीडब्ल्यूसी कंसल्टिंग चले गए। पर नॉन रैंकर, थर्ड अटेम्प्ट पास आउट, राइट, 3 अटेम्प्ट्स इन इंटर, 3 अटेम्प्ट्स इन फाइनल। इससे अच्छी सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती। इवन रैंकर्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू कंसल्टिंग गाइस। आप समझ रहे हो, राइट? तो दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आउट। अभी अवकाश शाह का वीडियो क्यों दिखाया? हाउ द हेल हैव शोन यू दैट वीडियो आउट? द सिंपल रीजन टू शो यू दैट वीडियो आउट इज, देखो प्लीज अंडरस्टैंड, रोने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। If you're ready to work hard in this next 35, 40 odd days, your CV and career can change and transition to next level. ठीक है, एक अलग लेवल पे चला जाएगा। बट अगर इस 30 से 35 दिनों में आपने नहीं काम किया, मैं सच बता रहा हूं, द डे रिजल्ट आर आउट, यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम एन एचआर, यू विल बी अनप्रिपेयर्ड, यू डोंट नो विच डोमेन टू गेट इनटू, जहां से कॉल आएगा वहां चले जाओगे, बाद में आप रिग्रेट करोगे। ये फैक्ट है। मेरी एक जर्नी बताता हूँ। व्हेन आई क्लियर्ड सीए फाइनल, राइट, आई क्लियर्ड इन 2019, एंड व्हेन आई क्लियर्ड इट आउट, आई ऑलवेज वांट टू गेट इनटू टीचिंग। मेरे टाइम तो ये सब गाइडेंस सेशन होते नहीं थे, बट आई ऑलवेज वांट टू गेट देयर, आई डिड नेवर गो देयर। व्हेन आई क्लियर्ड माय सीए फाइनल, राइट, आई गॉट माय फर्स्ट ऑफर फॉर 12 लाख रुपीज। आई गॉट प्लेस्ड इन उड़ान, 12 लाख का मुझे पैकेज मिला था। आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पांच सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई, 12 लाख का पैकेज मिला था, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। बट वो खुशी तब तक की थी जब तक कि मैंने मेरे दोस्त का ऑफर लेटर नहीं सुना था। I was happy till the time I did not do my friend's package. It was the same story what happened in Three Idiots, right? वो कहते हैं ना, दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, और दोस्त टॉप करता है तो क्या होता है, राइट? हाँ, तो माय फ्रेंड गॉट ऑलमोस्ट द रिवर्स ऑफ व्हाट आई गॉट, राइट। आई हैव बीन रिलेटेड आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना? तब उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग, मैंने क्या गलती की, जबकि वो मेरे से गधा इंसान था। जस्ट बिकॉज ही न्यू द गेम रूल ऑफ अ गेम। आप समझ रहे हो? अगर गेम के रूल पता है तो आप जीत जाओगे, राइट। समझदारी ठीक है, एक हद तक काम आएगी, बट उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा शाना बनाना पड़ेगा। यू नीड टू गेट सम रेफरेंसेस, यू नीड टू नो व्हाट इज नीडेड इन द मार्केट, एट द टाइम यू डू दिस आउट, बाय नॉट, राइट। अभी जस्ट रिसेंटली आई वेंट टू दुबई, वी हैव अ वेरी स्ट्रांग एलुमनाई बेस एंड अ कम्युनिटी, दिस कम्युनिटी ऑफ 13,000 स्टूडेंट्स। अभी जस्ट व्हेन आई विजिटेड दुबई, हमारे 200 बच्चे दुबई में प्लेस है। अब मैं काफी लोग से वहां से इंटरेक्ट कर रहा था, सच बता रहा हूँ, दिस इज अ फैक्ट, राइट, एंड आई कैन जस्ट शो इट टू यू, द सक्सेस स्टोरी ऑफ लॉट ऑफ पीपल आउट। तो व्हाट हैपेंड इज, ऐसे एवरेज एवरेज स्टूडेंट है जिनके इंडिया में 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख के पैकेज थे, वो भाई वहां जाके 24, 25, 30 लाख के पैकेज फोड़ रहे हैं। और मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड था, राइट, जो मेरे साथ था 2019 में, वो आज मेरे से ज्यादा रईस है, वो दुबई में जाके जॉब करता है। भाई ने मुस्टांग लिया है, एक 1.5 करोड़ की गाड़ी लिया है भाई। आप सोचो। तो ऐसे भी लोगों के करियर ट्रांजिशन हुए हैं, राइट, प्रोवाइडेड द नो राइट मार्केट, राइट प्लेस, राइट थिंग आउट, एंड दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट। And that is only possible, guys, when you leverage this time out. Because please, again, I'm telling you, एक बार ये समय चला गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा, right? चलो, the next, let's move to the next part. I hope you guys are enjoying the session. यार सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं यार, बता ही नहीं रहे। शांत शांत बैठे हैं हमारे बच्चे। कुछ लोग तो ऐसे दुबुक के बैठे हैं यार। वीडियो ऑन कर दीजिए यार, हमें भी मजा आएगा, हम भी देखें यार क्वालिफाई सीए कैसे दिखते हैं, राइट। फटाफट फटाफट यार, यहाँ पे काफी सारे लोग जूम पे कनेक्टेड है यार, वीडियो ऑन कीजिए, राइट। तो हमें भी मजा आए, राइट। सुपर सुपर, क्या बात है। चलो यार, काफी देर से मैं बोल रहा हूँ, तो लेट अस प्ले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जनरली हमारे काफी सारे सेशन में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का मतलब होता है कि विल गिव यू वन स्मॉल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, एंड द पर्सन हु गिव्स द राइट आंसर, उसको एक छोटा सा तोहफा, एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, राइट। बट आंसर आपको देना पड़ता है ऑन अ यूट्यूब लाइव चैट, ठीक है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड ऑन यूट्यूब लाइव चैट, राइट। हाथ गरम कर लीजिए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आने वाला है, राइट। केबीसी देखा होगा आपने, राइट। जीतने वाले को मिलेगा गिव अवे ऑफ 1,500 रुपीज। तो तैयार हो जाइए। पार्थ कह रहा है सर रुकिए रुकिए, अभी आपका चैनल खोलते हैं, अभी देखिए सर मैं ही जीतूंगा। दिव्या जी, ऑल द वेरी बेस्ट। दिव्या जी, जीत जाना तो मजा आ जाएगा, राइट। 1 मिनट दो सर, ओके, 1 मिनट ले लीजिए। चलिए, आपके स्क्रीन पे यूल गेट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आउट, राइट, एंड यू नीड टू गिव द आंसर ऑफ द सेम। जैसे ही आप आंसर देंगे यूट्यूब लाइव चैट में, जो भी इंसान सबसे पहले से आंसर देगा, राइट, विल गेट अ गिव अवे। द रिजल्ट्स एंड द विनर्स विल बी अनाउंस एट द एंड ऑफ अ सेशन। ओके जी, ओके। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। धड़कनें तेज हो रही है कुछ लोगों की, बट तैयार हो जाइए। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल।
in front of your screen. The question is, आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है. You need to count the number of triangles which is there in this diagram. कितने ट्रायंगल्स है गिन के बताइए, फटाफट बताएंगे. जो सबसे पहला जवाब देगा वो जीतेगा. रंजीत देखिएगा भाई, कौन है कौन है कौन है भाई जीतने वाला विजेता. जीतने वाला विजेता कौन है? वाह, जल्दी बता दीजिए गाइस, कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप. प्रथमेश, ऑल बेट्स ऑन यू. ऑल बेट्स ऑन यू. वाह, गजब गजब गजब. एक इंसान ने तो 6-7 आंसर लिख दिए. बोले कोई नहीं तो कुछ तो सही होगा, ऊपर वाले का देख के ही लिख दो भाई. अंकित कुमार बोले अभी जाता हूँ चैट जीपीटी पे और बताता हूँ. बेटा जितनी देर में चैट जीपीटी पे जाओगे, समवन एल्स हैव टोल्ड इट. ओके अंकित जी. चलिए चलिए चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स गाइस, कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप. अभी तक तो हमको शायद विजेता तो मिल चुका है. अच्छा, जिन्होंने आंसर दे दिए कोई दिक्कत नहीं, आप गए हो तो अब लाइक भी दबा दो यार, अच्छा लगता है हमें भी. ऐसे ना करो यार, ऐसे ना करो, लाइक भी दबा दीजिए, अच्छा लगेगा. दैट इज व्हाट अ मोटिवेशन फॉर अस गाइस. आ हा हा. अरे कर दो यार, कर दो, लाइक भी कर दो यार. बहुत शानदार. चलो ग्रेट, आई गॉट द करेक्ट आंसर. राइट, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है. हु इज द विनर? बट नेवरदलेस लेट्स मूव फॉरवर्ड. हार जीत तो लगी रहेगी. Let's move to the next part. I hope you have taken the snapshot of the same. Don't worry if you need any help or what I'll do. रंजीत, ये पीडीएफ अपन है ना, विल ट्राई टू शेयर दिस इन आवर स्टूडेंट्स कम्युनिटी ग्रुप. अपना जो नवंबर 24 का Yes, you'll do कम्युनिटी it. ग्रुप है ना, तो उसका एक बार लिंक भेज दो चैट पे. For the students, Yes. those who have not joined the November 24 community group, please join the same. We'll share this PDF there so that if you miss out anything, you can just join in. YouTube wali janta, what you can do, you can also join the community group which is there on the description. You can just check it out. Now let's move to some other stuff. That is, sir, एक चीज समझ में आ गई, बिग ब्रांड नेम्स कहाँ से आएंगे? इंटर्नशिप से, एनजीओ से, फ्रीलांसिंग से एंड अदर एक्टिविटीज. राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स. How the hell we can improvise the communication skills, right? Since this was one of the very biggest problem which we wanted to solve for you guys, and finally this is solved and will be solved in upcoming days in a much better manner. So we will be launching our communication interview bot, right? And definitely you can use some coins. We give 100 coins when you log into our tools portal out. And a कुछ tools आप initially मतलब you can just practice out twice or thrice free of cost, right? Which is there, which is one of the very biggest initiative which we have launched for you guys, right? Which we are trying this to launch this week. So what this bot is going to be doing it for you, it is going to be helping you to improvise your communication. जैसे कि communication includes few 6 to 7 odd things or 8 odd things. जैसे कि read aloud, listen and speak, one word, read the sentence, fill in the blank, listening skills, sentence construction, word writing a sentence, and simple conversation. अब होता क्या है, सिंस वी आर वेरी बैड एट दिस, राइट, आपको जो भी वीकनेस अपनी लगती है यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, और देयर विल बी अ कंबाइंड टेस्ट व्हिच इज गोना बी देयर. जस्ट आई जस्ट शो यू फॉर अ सेकंड. से फॉर एग्जांपल इफ यू गो हियर एंड यू स्टार्ट इट आउट, ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक सेंटेंस दिख रहा है. यू जस्ट नीड टू रिकॉर्ड इट योरसेल्फ एंड द बॉट इज देन गोना बी गिविंग यू अ फीडबैक कि whether you have given it or whether you have done it in a right way or not. Simply you need to listen He and enjoys speak. reading books on rainy days. I hope you have got that out. सुना नहीं सुना, सुना नहीं सुना. Again, I'll play it out. He enjoys reading books on rainy days. हाँ, तो जैसे कि it's working on a listening skills. So what is something which we are trying to do? We are trying to launch it out at very nominal cost और almost free रहेगा कुछ लोगों के लिए, since coins मिलते हैं once you log in it out. It's a part of a main website which is tools.cmonk.com. जैसे आप यहाँ log in करते हैं, you get a coins. 100 coins आते हैं, उसको आप use करके you can just practice it out. Second thing, what you can do, there is an interview bot which is there, right? And whichever domain you're interested into, select an interview bot, start practicing. Start audit में जाना है तो start audit. If you're a fresher, select a fresher. Next, do it out. Once you do this, bot is gonna be taking your interview, and which is in English, for which you can improvise your communication. Hello, skills. Shivam. I'm Lisa, a chartered accountant recruiter specializing in the statutory audit domain. It's great to meet you. Could you please tell me a bit about yourself and your background in accounting?
Okay. So what this Lisa is doing? Lisa is again a chartered accountant bot. She's asking me questions out, and it can only understand English. I can record my answer, right, and give it to them. So sorry, I missed out the question. So I've done my articleship from EY and mainly worked into statutory audit domain, where I've worked in areas like Schedule 3, Ind AS, Caro, and I've worked handled end-to-end clients related to stat audit. Okay, कुछ pronunciation issue है मेरे इसमें. I'm just doing it like just learning it out. Okay. Now again, Lisa is going to Thank be you for asking. sharing that, Shivam. It's good to hear about your articleship experience in statutory auditing. Let's delve into some specific questions. Can you explain what the primary objective of a statutory audit is? Okay. Again, this bot is going to be asking you some more questions out, so through which you can practice, and improvise your communication with technical. Right, तो अब कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड दैट इज व्हाट वी हैव फिल्ड आउट फॉर यू गाइस, राइट, व्हिच इज देयर. तो लॉग इन करोगे तो 100 कॉइंस आएंगे, 50 कॉइंस यूज इट आउट फॉर अ प्रैक्टिस, अगेन यू कैन यूज इट आउट अगेन. ठीक है. So that is one of the very big initiative which we have brought it for you guys, through which you can improvise your communication skills. ठीक है. That is tools.cmonk.com. वहां पे जाके आप कर सकते हो. ठीक है. Next is references. How the hell we can gather the references? तीसरी चीज पे आते हैं. सर रेफरेंसेस कहाँ से इकट्ठे करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Number one, join the places where you find out some top people out. Okay, just very interesting things, very interesting places you can go. Now there are few premium gyms where you will find out some rich or good people are joining in. एक दो महीने के लिए join करिए. Trust me, it's an investment. Okay, again, if it's up to you, you can go there. You can join some sports club if you're interested, or you can part of some of the good events. Again, if you're interested. If you're based out of some tier one city, there is a e-chai club which is there. It's again a free events for a lot of startup founders, right? A lot of startup founders comes there. You can go e-chai, and nowadays a lot of ICI sessions are also happening, and so you can be a part of those. So इस तरह के आपके काफी सारे events आपको मिलेंगे where you can just go network with the people out, talk to them, meet those people out. Next, how do you gather other references out? 24th of November, we have a networking event where different part of India, different people are going to be joining in. A lot of my previous batch students are also going to be joining in. तो वहाँ पे आपको references मिल जाएंगे. Third, of course, if you are interested and if you are a part of a GR workshop, so there we invite different industry leaders, right? For all the domains, we have our mentors. And over a period of time, since you will be a pre-result batch of students out, you'll be interacting with 80 to 90 different mentors of different companies. Few of them will be CFOs, partners, directors of some big fours, right? Those people will be also joining in. So till the time your journey progresses, you'll be definitely interacting with a lot of people. And the last and the most important thing is the LinkedIn, right? LinkedIn से आपको भी काफी सारे references मिल सकते हैं. Just giving you a small demo, right? Whatever I'm telling you, I have also implemented in my life. So that is why I'm telling you out. Let me just show you again a demo. Okay, very simple. So what you have to do, example, I'll just show you some names. Before that, right, I think we have a very good placement statistic और अभी काफी सारे लोग भी join हो रहे हैं. I'll just show you Tarun ka profile. Right. In just a second, let me just search the name. Tarun Bakshi. Tarun Bindesh. Acha, sorry. Thanks, Ranjit. I just forgot his surname ka spelling. So, Yes. तो I reached out to this guy long back, right? Cold message जैसे work करते हैं वैसे आप यहाँ से भी references इकट्ठे कर सकते हैं. So what I did, I connected with this guy long back in January 2024. I just wanted to reach out to him because he's a nice guy. He's good at podcast and stuff. So I reached out to him, and currently he's one of my very good friend. Just via cold message. ऐसे references आप इकट्ठे कर सकते हो, right? But again, there should be Wi-Fi. Wi-Fi is nothing. What's in there for you? Just he was good at podcast. So I asked him, I watched one of your podcasts on this. Really happy to connect with you for a quick call. Where I have a student community base of 40,000 students. So he just reached out to me and saying that we had a good conversation. So that is what I did. है ना? तो काफी चीजें होती है when you are there.
right? When you're connected to the people out, and when you reach out to a LinkedIn pay, you need to know it's very, very important to reach out and cold message and connect with the people out. Now, what can happen? It can be possible that when you're reaching out to the people might ignore you, people might not reply you. Possible, right? जैसे कि मैं अभी दुबई गया था, अगेन आई कोल्ड मैसेज लॉट ऑफ पीपल आउट कि देखो, जैसे मैंने रेफरेंस यूज किया ना कि हाय निमेश भावेश रायचूर गिव मी योर रेफरेंस, आई एम अ सीए शिवम पलन, फाउंडर सीए मॉन्ग, right, supporting CA students and training this. I'm in Dubai till 8, love to connect with you and explore any opportunities for collaboration. This is what I did, cold messages. राइट, काफी सारे लोगों को कोल्ड मैसेज किया, जैसे राजेश सर को भी किया था, राइट, ही डिड नॉट रिप्लाइड, बट व्हेन आई कनेक्टेड विद हिम ऑन हिज पर्सनल फोन नंबर, ही रिप्लाइड मी व्हाई अगेन व्हाई रेफरेंस, दिस वाज अ मैसेज विदाउट अ रेफरेंस. I'll show you one more message which I did to him with a reference. I got a reply. I'll just show you a demo. राइट, आपको डेमो दिखाना पड़ता है. वो 3 dates में बोलते हैं ना बार बार, डेमो दिखाओ. हाँ, वैसे तुमको डेमो दिखाना पड़ता है. ठीक है, तो वही चीज है. देखो, दुनिया में यू शुड नो एंड गेदर द रेफरेंसेस आउट. आई टोल्ड यू ना, 80% ऑफ वैकेंसीज आपका काम रेफरेंसेस से ही होगा. दैट इज व्हाट इट इज. पीपल माइट इग्नोर यू, बट ठीक है, दैट कैन बी पॉसिबल. अब जैसे इसका मैं दिखा रहा था आपको, राजेश सर का. आई जस्ट शो यू. ऐसा नहीं आपको ही बोल रहा होगा कि सर ने तो पहले से ही सोचा होगा कि ये सेशन में दिखाएंगे, तो उन्होंने 8 अगस्त को मैसेज किया होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई. राइट, जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द फैक्टर्स. राइट, एक सेकंड दीजिए बस. हाँ, गॉट इट. इट्स जस्ट टेकिंग अ टाइम टू लोड. दृश्यम, हाँ दृश्यम, दृश्यम। वाह. ये याद है तुमको? अभी पूछता हूँ व्हाट इज SA-220, बताओ. दृश्यम के दृश्य याद है तुम्हें नालायक? ये कौन है दृश्यम वाला? मृत्युंजय। अरे भाई चलो, ग्रेट, बट दैट इज व्हाट इट इज. हाँ, नहीं, अगेन यार, यू नीड टू नो हाउ टू वर्क इनटू दिस सेक्टर, इनटू दिस एरिया. एंड इट इज जस्ट लोडिंग आउट. आई जस्ट मूव फॉरवर्ड मीनवाइल. ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, ये याद है भाई. चलो ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेटली राइट, सेंस एक और चीज दिखा देता हूँ आपको. ठीक है, so once you are here, a few good things. Again, I'm doing it for a lot of people, those who are connected with me on LinkedIn. I'm posting a lot of good things for you guys where you can just use it out. I've shared a lot of value adding documents for you guys in the past. So you can just go to the document section and you can just search those documents which are there. Just day before yesterday, I've shared the entire PDF on how to find a job on Dubai. Then this is again a list of companies which is hiring for industrial training. This is a list of my students of previous batches, those who have got placed into the best companies of world. The list of 750 odd CAs which are there, जो हमारे बैच के students थे, those who got placed into the best companies. Right, still the list is heading on. Let me see if it's loaded or not. हाँ, जैसे कि देखो, right, same, right. I gave a reference now to the same guy. Umesh Sharma sir give me a reference. And can we talk tomorrow? We had a meeting and I went to meet him out and he says it was great pleasure meeting you. आप समझ रहे हो क्या? सेम चीज यार. देखो, मैंने भी वही किया जो आपको सिखा रहा हूँ. ठीक है, बंदे ने सामने से फिर अपना बिजनेस कार्ड भेजा, ICI का प्रोफाइल भेजा, ये भेजा, अपना प्रोफाइल भेजा. राइट, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू मेक द कन्वर्सेशन टर्न फॉर यू. क्या मैं उन्हें जानता था? अरे बताइए, अरे बताइए, हाँ या ना? वॉज आई नोइंग हिम बिफोर गाइस? नहीं ना, नहीं जानता था. क्या किया मैंने? सिंपल से आई यूज वन रेफरेंस, connect with them, created a bond, nurtured it, converted. It is just a small process which I'm teaching you, which worked for me. राइट, अभी तो मुझे काफी सारा बेनिफिट्स भी हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टफ. राइट, उन्हें मुझे प्रोफाइल अच्छी लगी तो दे सेड दैट वी विल बी हैप्पी टू इनवाइट यू इन द सेशन इन दुबई. आप समझ रहे हो? तो मेरा तो पोर्टफोलियो बड़ा हो गया ना. राइट, अब नेक्स्ट टाइम कोई वेबिनार होगा, कोई सेशन होगा, तो आई विल बी इनवाइटेड टू दुबई. राइट, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच आउट, रेफरेंसेस इज रियली इंपॉर्टेंट. हाउ यू कम्युनिकेट इज इंपॉर्टेंट. हाउ यू मैसेज इट आउट इज इंपॉर्टेंट. नाउ थिंक, छोटी सी चीजें सोचते हैं. अगर आपने इन 30 दिनों में सिर्फ 30 लोगों के अच्छे से रेफरेंसेस इकट्ठे कर लिए, वोंट दैट हेल्प यू आफ्टर यू क्लियर? चलो, इवन इफ टच वुड ऐसा नहीं होगा, आप स्मार्ट लोग हो इसलिए आप यहाँ बैठे हो, मान लो अगर क्लियर भी नहीं हुए, तो ये बाद में भी तो काम आएगा ना. 6 महीने बाद नहीं आएगा? हाँ, आएगा ना, आएगा. राइट, तो व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज टू स्टार्ट.
राइट? अगर कनेक्टिंग द डॉट ही करते रहोगे तो दिक्कत होगा, राइट? स्टीव जॉब्स ऑल्सो से यू नीड टू कनेक्ट अ डॉट लेटर, नॉट बिफोर। ठीक है, राइट? आई होप यू गेटिंग इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना ना हाँ, यू कैन अनम्यूट एंड ऑल्सो लेट मी नो। क्या कह रहा है, लड़की देखना चालू कर दे क्या? क्या लिखा भाई? यस सर, समझ लड़की है तो समझ आ रहा है? हेलो बाकी लोग, आई यस होप सर। यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. यस सर, यस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो मैंने दुबई में 4-5 दिन सिर्फ यही किया है, राइट? बिफोर गोइंग टू इंडिया आई मैसेज द पीपल आउट, कनेक्टेड विद देम, टॉक टू देम, केम हियर, राइट? बिल्ड आउट अ गुड रेफरेंसेस, बिल्ड आउट अ गुड कनेक्ट, राइट? जो मेरे स्टूडेंट्स है उनको बोला अपने सीएफओ से कनेक्ट करवाओ, राइट? तो दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू आल्सो, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ नहीं है भाई, इफ द पीपल इग्नोर इट नो प्रॉब्लम, इट्स देयर लॉस। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, any tips of cold messages? That is something again we'll cover it out. Cold message is really important. अब इसमें भी if you could just see my post, right, comment section में अगर आप देखोगे तो every day there are 3 to 4 posts, right, where students are getting placed. जैसे मैं एक मल्होत्रा, right, she got placed into Blinkit, right? हर 2 दिन, एक दिन में 2 दिन में इतने सारे पोस्ट मिलते हैं। This guy got placed into FP&A दुबई, ये दुबई गया भाई अपना बंदा, right? Then he got placed into Deloitte। ये कब की बात है? एक दिन पहले की बात है भाई, right? So every day you'll find out 5-6 posts with my name, because genuinely we are into this industry and we want to help the people out in the best possible manner। ये तो PDF का ही है, right? So definitely if you can also want to connect our alumni base, I have given you the list of PDF also, you can just see it out and check it। ठीक है, so that is about the references and how do you reach out to people। देखो यार, करोगे तो काम का है, नहीं करोगे तो ज्ञान ही ज्ञान है यार, right? So that is there। This guy Gauरी Kapoor joined Deloitte, ये 2 दिन पहले का है, right? This guy joined which company? Tata Capital, right? ये भी 2 दिन पहले का है। She joined Grant Thornton, ये 2 दिन का है, right? ऐसे रोज के 10-12 पोस्ट भी मिल जाते हैं कभी कभी, right? Because we know the in and outs of this industry, and that is why what we tell to our students to follow. Those who follow, those who reach, those who don't follow will watch this video again, right? And follow it later. Next, okay. Next is very important, resume। तो resume में few important things which you need to incorporate as, of course, domain wise things which are needed। जैसे कि say for example whichever domain you are targeting, Aditi ji, if you are targeting FP&A, you should incorporate the things related to FP&A, right? If you're going and targeting FDD, you should incorporate the things like FDD, right? I have a story of one of my student, हेमांगिनी, और शी क्लियर्ड इन 6 अटेम्प्ट्स, 6 अटेम्प्ट्स में क्लियर की थी। आर्टिकलशिप की थी सोलापुर से, एक मीडियोकर फॉर्म से, राइट? शी गॉट प्लेस्ड इनटू डेलॉयट एफडीडी 6 अटेम्प्ट के बाद। हाउ? बिकॉज शी हैड अ रेफरेंस। नंबर 2, रेफरेंस ऐसा वैसा नहीं था, लिंक्डइन कोल्ड मैसेज से लाई उसने, राइट? एंड सेकंड, शी हैड अ वेरी गुड ग्रिप इन एफडीडी। उसने एफडीडी का मेरा कोर्स किया था, मास्टर क्लास किया था, फॉलोड व्हाट आई सेड, बैंग ऑन, शी गॉट प्लेस्ड इन एफडीडी। पैकेज approximately I think 13 lakh था फिक्स्ड उसका, प्लस वेरिएबल which goes around 15-16 odd lakh, which is a good package। एफडीडी के लिए one of the best dream role रहता है लोगों का, very easy exit to IB, right? So that is what it is। एफडीडी में काफी सारे रैंकर्स भी जाते हैं, right? Because that is a area which help them to get into IB, right? We will learn about the domain in over a period of time, but what I'm trying to tell you out, people have done it, I can share you a lot of success stories, but again it's up to you if you're interested to listen or not। Then a lot of advanced tools are coming these days। You can also pivot your journey towards that, like Power BI, Tableau, Excel, SAP, Ultrix, how to invest the money, Data Studio, and Python for Finance। Those all are very growing domains, guys, where you can just think of it। ऐसा नहीं है कि हमें प्रो बनना है, ऐसा है कि चलो एटलीस्ट यू शुड नो बेसिक्स, वेयर यू कैन जस्ट शोकेस टू द वर्ल्ड यू नो समथिंग नाउ, राइट? एंड ट्रस्ट मी, देखो यार, ऐसा नहीं है, कुछ वीडियोस अवेलेबल रहेंगे फ्री में यूट्यूब पे, कुछ पेड कोर्सेज रहेंगे, आपके ऊपर है, जो आपको करना है करे भाई। ऐसा कुछ नहीं कि यही लेना है वही करना है, राइट? देखो, इट्स अ वर्ल्ड, राइट, वेर यू नीड टू नो द थिंग्स आउट, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। Next, this days may I generally ask you guys to start preparing your resume. See where you are standing today. Start with your draft resume, guys. Once you know where you're standing today, you can know, what are the things you can improvise on. Right? I'll be again trying to upload some videos on resume. That is there. Start reading some books.
self-help books or some business books which can give you some good exposure, good knowledge. Personality अच्छी होनी चाहिए, especially the communication skills is really important. Meet new people, which you'll meet on 24th of November. Watch our daily interview session videos out, which is there on a YouTube. My YouTube channel has a very good content videos of students those who have got placed into best companies, plus domain-wise videos which are there. Some technical videos are there. A video on how to get a job in Dubai is there, right? काफी सारा value adding content डाला हुआ है मेरे channel पे, which can give you a hell lot of things which is there. Your personal branding is really, really important, Pawan Kumar ji, because people should know you. Your LinkedIn profile should be strong. And if you're interested to go on Quora and Medium, तो it's fine, but otherwise LinkedIn is also okay. Instagram में उसकी रील स्क्रॉल करके कुछ नहीं मिलेगा, right? उसको लाइक मिलेगा और उसको स्पेंड टाइम मिलेगा, but what is important for you is my career. Simple. I'm not saying you can leave all the things aside, but I'm telling you, if you want to win the race, if you want to get an edge, do it. मैं सच बता रहा हूँ, I can bet you out. मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, those who are non-ranker, have got a very good package as compared to rankers. सच बता रहा हूँ. This is a fact. They have transitioned it. Fifth attempt, sixth attempt, fourth attempt, second attempt, people have also done it. It's all about a game of a mindset. Okay? How do you present yourself? How do you showcase yourself? It's all about telling your story. Right? If you tell to one people that मैं दुनिया को बोलता हूँ, देखो, I am Shivam Palan. I've done my articleship from a mid-sized firm where I have worked on this. वो सुन के ही बोलेगा ये गधा आदमी है. There is no mid-sized firm or a small firm. You present your story in a nice way. I am Shivam Palan. I've done my articleship from a leading firm in Raipur. Leading firm. वो impress हो जाएगा, बोलेगा गजब आदमी है. Right? It's all about your storytelling, guys. It's all about how you deliver yourself. It's all about how you sell yourself. Because वही है जो दिखेगा वो बिकेगा. I've been getting it. And if you have some skill sets, if you have some knowledge, if you use it out wisely, you'll get an edge. Right? अगर आप सोचोगे नहीं यार, अभी तो गोवा जाने का टाइम है, राइट? अभी तो न्यू ईयर आ रहा है, कुछ तो मना लेता हूँ, कुछ तो कर लेता हूँ, राइट? तो गॉन. ठीक है? But if you use this time wisely, you can translate to next level. Okay. Next, one of the very good advice which I give to the students, very few of them follow, is to find out a mentor wherever you want to get into. जिस सेक्टर में जाना है, जिस डोमेन में जाना है, उसको पकड़िए, उसको रीच आउट करिए, उसे मेंटर बनाइए. That is gonna be helping you out, right? So this all things which you need to do, which will help you to get an edge. Now, very very interesting thing, which is there, which I just again want to communicate to you, right? I just covered what all things are needed. Now, one very interesting and important thing, right? There are life में हमेशा दो choices होते हैं इंसान के पास, right? There are always two choices which the people have. Sir, which two choices you are talking about? जीवन में कौन से दो choices के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, now all these things you can do it on your own. आप खुद से भी कर सकते हैं. मैंने बताया ये 5 चीजें पे काम करना है, खुद से भी कर सकते हो. Next, you can take the help of people out. Your decision, your life, your choice. CA फाइनल खुद से भी पढ़ सकते थे या किसी की हेल्प से भी पढ़ सकते थे. खुद से पढ़ सकते थे, हाँ सर पढ़ रहे हैं, ये 5 चीजों पे काम करना है, पता है, वेरी गुड. But if you want a help, definitely we are there to help you out. We are this industry for 5 years and we have a very strong alumni base and a community base, right? Where we run this as a part of our training program, which is called as a Getting Interview Ready batch, right? We have completed 66 batches and 67th batch and 68th batch is starting from 25th of November. Timing is 7 to 10:30 a.m. morning batch, 7 to 10:30 p.m. evening batch. Now, what all things are covered here, right? Which is very, very simple. Batch is for 14 live days, right? Live इसलिए है because असली preparation live में होता है. I say feedback is a breakfast for champions. I'll make you champion in the batch. Whatever experience I have, whatever alumni base I have, will use it to the fullest level. आपका ITC का इंटरव्यू है, कल आपके पास ITC का इंटरव्यू का डिटेल्स रहेगा. डिटेल्स का मतलब what type of questions generally people ask. You'll have a mentor out there. And plus you have a community base who can help you out anytime. Second, right, बोलने के लिए batch पे 14 days का है. But the best thing about a batch is we will support you till the time you get placed in your dream company. Right? But do we guarantee out somewhere? Guarantee देता तो मैं next prime minister रहता इंडिया का कि I will reduce the unemployment rate. Nowhere it is written. But हाँ पूरा एक edge मिलता है. Now what all things we cover? We start with the basic of resume. Right? Even if you have done a dummy articleship, I'll tell you how do you prepare your resume in a best way. We'll prepare and help you customize your resume based on the domain where you want to get into.
Sir, how do we decide a domain? The green one which you could see, we are bringing the best industry leaders and mentors who are gonna be coming and through which you can network with those people out. जैसे कि अब मान लो मैंने बुलाया राइट रजनीश देसाई को, ही इज द एक्स केपीएमजी पार्टनर, करंट पार्टनर ऑफ केएनएवी, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेफरेंस एज मिल गया. अश्विनी, राइट, ही इज वर्किंग एंड फाइनेंस हेड ऑफ ईटीजी ग्रुप विच इज अगेन इन दुबई, राइट. तो आपको काफी सारे मेंटर्स से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ अ प्री रिजल्ट बैचेस, काफी सारे मेंटर्स आपको मिल जाते हैं टिल द टाइम योर आईसी कैंपस और प्लेसमेंट्स कम इन. तो 50 से 60 सेशन तो इसी के ही हो जाते हैं, प्रोवाइडेड यू आर इंटरेस्टेड टू कम इन फॉर द सेशंस. दैट इज दैट. नेक्स्ट, लिंक्डइन सेशन. अभी जो मैंने आपको बताया ये तो कुछ भी नहीं है. लिंक्डइन सेशन आई जनरली टेक इट फॉर 8 आवर्स. 8 घंटे चलता है मेरा लिंक्डइन का सेशन. 8 घंटे लिंक्डइन चलाना सिखाऊंगा. कैन यू इमेजिन? दैट इज व्हाट अ लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड अगेन द नौकरी इज अगेन गोइंग फॉर 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटा सिर्फ नौकरी पोर्टल चलाना सिखाते हैं, राइट. हाउ डू यू यूज एन नौकरी विच इज देयर. अब ये खुद से भी कर सकते हो, बट खुद से करोगे, रिसर्च करोगे, इट्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स व्हिच इज इन्वॉल्वड, बट अगेन इट्स योर चॉइस. नेक्स्ट, प्री रिजल्ट बैच में वी डिवाइड एवरीवन इनटू अ टीम एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी डू इज वी प्ले अ बिजनेस सिमुलेशन. ये पोस्ट रिजल्ट बैच में नहीं खिलाते हैं. USP of pre-result batch is a business simulation, which I showed you in one of the resume of Ritika Sinha and a lot of students out. इससे आपका CV 100% transition हो जाता है. Where you can transit your domain to FP&A or consulting or bit of IB side, because this is the one of the costliest game which is taught in every B school. तो भी आप कुछ कहेंगे. Lot of companies conducts a group discussion. We'll discuss about it. HR questions, salary negotiation. कुछ नहीं तो ये session देखने के बाद at least your salary will increase by 50,000 if you follow the things. Practice and aptitude test, English test, technical questions, mock interview, domain wise guidance, elective sessions. यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं हो रही है. What all things we'll be giving it to you guys? You will get one-on-one counseling session with the industry leaders. एक free मिलेगा आपको, batch fees में included है. One free technical master class. Say for example, I am looking to prepare my CV and edge my CV for IB. IB की एक free master class मिलेगी आपको, इसका अलग से चार्ज नहीं देना है, वो भी हो गया. We have a regular doubt solving session. Generally, we do it on alternate days. The last time we had around 50 odd doubt solving session. मतलब 100 doubts, 100 दिन में approximately चले थे doubt solving session. We support you till the time you get placed. Don't worry, you have my number. You can reach out to me. ICA campus का guidance रहेगा. Mega preparation bootcamp is included. 10 company campus में आएगी, और if you are shortlisted for 4 companies के mentors will be in front of you. Those who are going to be guiding you. AI इंटरव्यू बॉट के लिए आपको एडिशनल कॉइन्स मिलेंगे विद द बॉट व्हिच आई शोन. उसके लिए एडिशनल 500 कॉइन्स आर देयर एंड यू विल नेटवर्क विद इंडस्ट्री लीडर्स. नाउ वन बिगेस्ट कंसर्न, सो व्हाट इफ आई डोंट क्लियर इन दिस अटेम्प्ट? डोंट वरी, यू कैन जॉइन द नेक्स्ट बैच इन May 25. होपफुली ऐसा ना हो, बट May 25 में आप आ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. तब आपको फीस नहीं देना है. May 25 में फिर से आ जाना बैच में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. बट अगेन, राइट, इफ यू आर सीरियस एंड इफ यू आर रेडी टू डिवोट अ टाइम, राइट, टाइम डिवोट करने के लिए, इज्जत से आने के लिए रेडी हो तो आना, नहीं तो मत आना. बिकॉज इट रिक्वायर्स अ सीरियस रिगरस प्रिपरेशन फॉर 14 डेज. 14 दिन आपके जीवन के सबसे अच्छे दिन रहेंगे और सबसे बिजी दिन रहेंगे. इतनी मेहनत आपने आर्टिकलशिप में भी नहीं की होगी जितना आपने नेक्स्ट 14 डेज में करेंगे, राइट. एंड समवन विल आस्क मी, सर रिजल्ट के बाद बैचेस आएगी क्या? हाँ, रिजल्ट के बाद 6 बैचेस आएगी. प्री रिजल्ट 4 बैचेस, पोस्ट रिजल्ट 6 बैचेस. एज मिलता है प्री रिजल्ट बैच स्टूडेंट्स को. Reason being, you're prepared as and when the results are out, and there is nothing to lose. And if you don't clear, don't worry. May 24, May 25 में आ जाना फिर से फ्री में, right? So that is what we have created, right? And if you want a feedback, you can reach out to any of our student of a previous batch. You can reach out to a community base. But I generally recommend not to miss out this opportunity. There's nothing to lose for you, right? Last thing before I move, for the doubts, sir, where to register from? And what is the mode of a communication in the batch? The batch is in 100% English, and you can register going to cmonk.com. रंजीत आप लिंक डाल दीजिए चैट पे, YouTube और Zoom पे. You can go to cmonk.com, click करना टॉप पे. Once you click it out here, you will get a batch details. You can choose any of the batches which is there. Once you have chosen a batch, that is going to be a batch for you. Morning आना तो morning, evening आना तो evening, right? And once you're here, right, leave all your stress, worries, interviews, tension to me, because we are good at that, right? That is what it is. So what if I miss any of the session? You'll get a recording of the same. आपको recorded मिल जाएगा. But again, recording की कोई वैल्यू नहीं है, right? कोई कहेगा कि मैं YouTube पे देख के सब करूंगा. हाँ, YouTube को पूछिए, give me a feedback. How did I introduce myself? YouTube बोलेगा very good.
Nothing is going to be happening. Interview preparation cannot be done by watching a video. CA final preparation can be done because वहाँ टाइम बचाना है. यहाँ टाइम बचा के कुछ नहीं होगा. यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना है, यू आर द बेस्ट, राइट? बिकॉज इंटरव्यू में समथिंग यू नीड टू स्पीक प्रैक्टिकली, राइट? तो दैट इज व्हाट वी आर गोना बी टीचिंग यू आउट इन दिस बैच. ठीक है. Ranjit have shared the link for the batch which is there. The batch is starting from 25th of November, right? Which is there. And still, if you have more queries or doubts regarding the batch, we have a pre-kickoff session also happening in. You can just check it on the event page. Once you go to the event section, ये 23rd of November को इवेंट सेक्शन में प्री किक ऑफ है, जहाँ पे पूरा डिटेल में मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है बैच में, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी मेहनत करना है आपको, राइट? कैसे होगा प्लेसमेंट, कैसे हम आपको हेल्प करेंगे, हाउ दिस इज गोना बी डिफरेंशिएटिंग यू फ्रॉम अदर्स. So that is something is exclusive event for DI. But if you are aware of, if you're interested, join it, buy it, nothing like that. Next, our next event for upcoming days will be on 20th of November, which is on management consulting. Where we will be solving one very interesting case study on 20th of January. No, sorry, 20th of November. Then we have an event on investment banking and a networking event and a pre-kickoff event, which is there, right? So that was an overall coverage about the today's session. Takeaways from today's session. Number one, sir, I need to work on 5 major skill sets or 5 major things for myself. The first is reference. I need to gather some references. I told you how to do it. I showed you practically also. Right? ये तो एक तरीका है. ऐसे 10 तरीके और हैं जहाँ से आप गैदर कर सकते हैं. Right? Second is resume. Third is communication skills. Fourth is building up brand names. And fifth, strengthening your articleship experience. So articleship experience कैसे strengthen हो सकता है? Definitely you can strengthen it by watching some master classes or courses. अगर GR में आते हो तो एक मास्टर क्लास फ्री में मिलता है, जैसे कि स्टार्ट ऑडिट. आई टीच यू फ्रॉम अ डमी डेटा प्रैक्टिकली कैसे ऑडिट करते हैं. कोई दिक्कत नहीं, आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं किया, हमने बिग फोर का ही पूरा मटेरियल डाल दिया कि क्या करता है भाई बिग फोर, प्रैक्टिकली सिखाएंगे उसके डमी डेटा से. ठीक है, टेंशन लेने का नहीं. थिंग्स कैन बी लर्न. समय अपने पास इज्जत से सीखेंगे. So that is how we can update it. 5 things I can work on. Sir, then I told you about one very interesting thing. You can try to get some shorter internships. You can find it on Internshala, or you can just search some of the shorter internships. You can join an NGO. You can go with some freelancing or some CA firms which will help you out. Gather some references via LinkedIn, right? Connect with the people out either going to ICA event, ECHI, sports club and stuff. You can also join a networking event on 24th. Then resume mein, you need to incorporate the skill sets which is area or domain where you are interested into. Learn the skill sets which market is demanding, right? And which can help you to outshine yourself. Next, you need to create your personal brand by mentioning or writing something on LinkedIn, active, read some books, right? And work on your personality development. That was an overall idea about the today's session, right? Okay. Last, you always have 2 choices in your life. खुद से करें or you need a help. We are happy to help you out. ठीक है. So definitely you can take and leverage or edge of my experience and definitely we can help you out. सबसे अच्छी चीज होती है कम्युनिटी में आने का कि कहीं भी फंसते हो तो पता है कहाँ जाना है और किसके पास जाना है. सेकंड, कहीं कुछ नहीं होता तो एक रेफरेंस मिल जाता है. सर कल मेरा टाटा कम्युनिकेशन का इंटरव्यू, कोई है कि आपका स्टूडेंट, लो बेटा ये नंबर है, इससे बात कर लो, बताओ. ठीक है. तो वो एक एज है हमारे पास कि कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, गाइडेंस है, टेक्निकली प्रिपेयर्ड है, सीवी स्ट्रांग हो जाएगा, सीवी रिव्यू हो जाएगा, वन ऑन वन काउंसलिंग हो जाएगा, मॉक इंटरव्यू हो जाएगा, right? And regular doubt solving होता है. So that's it about the today's session, right? So I hope you guys have enjoyed the session. So sorry if the session might have gone heavy for you. जसप्रीत कह रहा है अब तो चाय की चुस्की के बिना काम नहीं होगा. जसप्रीत सिर्फ चाय की चुस्की लेना बेटा, और कोई चुस्की नहीं ले सकते आप. ठीक है, चलो ग्रेट. तो नाउ व्हाट विल डू, राइट? अरे हाँ, राइट, विनर बनाते हैं, विनर बता देते हैं, राइट? विनर विनर दिसंबर में भी बैच रहेगी. नेक्स्ट बैच स्टार्टिंग ऑन 12th, राइट? नेक्स्ट बैच स्टार्टिंग ऑन 12th. ठीक है, तो वो चीज है. जो भी डाउट्स है एक बार डाउट्स ले लेते हैं, राइट? एंड डेफिनेटली विल अनाउंस द विनर. रंजीत एक बार विनर का मैं नाम बताता हूँ, है ना? उसकी डिटेल्स Yes. आप मैसेज एक बार रंजीत को पिंग कर दीजिएगा, राइट? विनर इज मैं दिखा भी दूंगा स्क्रीनशॉट, बट ये विनर का नाम पता नहीं. ABCEIOUS. Abelius, I saw that. वो किसका यूजर नेम है अब? We need to अबिलियस. know that. Abelius. अबिलियस. अबिलियस जी जहां कहीं भी हो मंडप पे आने का कष्ट करें या हैंड रेस कर दे. रंजीत Yeah, आपसे me, कनेक्ट कर लेंगे. Abhishek Agrawal is telling he.
वेरीफाई करना पड़ेगा। उसे कमेंट करवाओ वीडियो पे। अबेलियस। ठीक है, एक्सटर्नल प्रूफ लीजिए, चलो बट ठीक है। टिल ये व्हेन वी कैन अबेलियस रजिस्टर। अबेलियस को मैं तारनजीत मैसेज से कर देता हूँ, वी विल चेक हाँ, इट। आप मैसेज कर लो, आप मैसेज कर लो, कनेक्ट कर लो। यस, अभी डाउट जो भी है गाइस, जो भी चीजें पूछनी है बेझिझक बेशरम होके राइट पूछ लीजिए, भाई आपके साथ बैठा है, टेंशन मत लीजिए। टिल व्हेन वी कैन रजिस्टर, अर्लियर द बेटर। लास्ट टाइम हुआ था कि हमारी मॉर्निंग बैच जल्दी फुल हो गई थी, तो आप देख लीजिए भैया। राइट, मॉर्निंग फुल हो गई तो फिर इवनिंग में आना पड़ेगा, या इवनिंग फुल हो गई तो मॉर्निंग में आना पड़ेगा। कोई प्रीति जी कह रही है सर ठंडी का मौसम चल रहा है, मैं नहीं उठती सुबह, है ना। प्रीति जी कह रही है अपन उठेंगे शाम को। ओके प्रीति जी, ओके। राइट, चलो ठीक है, ये भी सही है। बैच कब खत्म होगी? बैच खत्म होगी, बैच वैसे तो कभी खत्म नहीं होती है। राइट, मतलब वैसे तो 8th को खत्म हो जाएगी, बट वो चलते रहता है। फिर डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटर सेशन, जीडी सेशन, पीआई सेशन, राइट, फीडबैक चलता रहेगा, एडिशनल कंपनीज के मेंटर्स आते रहेंगे, तो वो चलता रहता है। और 8 दिसंबर में 8/12 से आएगा, तो दैट इज व्हाट आई कैन से। व्हाट शुड आई डू फॉर कम्युनिकेशन फॉर टुडे? यू कैन गो टू आवर एआई बॉट, फ्रॉम देयर यू कैन प्रैक्टिस इट आउट। फिजिकल इंटरव्यू प्रेप भी होता है सूरज। लास्ट टाइम हमने वनडे मैराथन भी लिया था 4 to 5 डिफरेंट सिटीज में, बिकॉज कैंपस फिजिकल था, तो आई वेंट टू 4 5 डिफरेंट सिटीज आउट, एंड मैंने फिजिकली मैराथन भी लिया था, वनडे मैराथन। हाँ 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 हाँ। जैसे होता है ना आपका आजकल सीए फाइनल में भी ट्रेंड आ गया है, तो वैसे इंटरव्यू प्रेप में भी आल्सो स्टार्टेड इट आउट, वी केम टू योर सिटी एंड डिड द सेम। ओके, प्रैक्टिस पे दोस्त एक अलग से सेशन लेंगे, डोंट वरी। राइट, दैट इज व्हाट इट इज। सर व्हाट शुड आई डू फॉर कम्युनिकेशन? बता दिया मैंने दोस्त, कम्युनिकेशन का। सर माय यूजर नेम इज दिस, ओके। सर irrespective of result I want to join job earliest it is advisable to join the batch, yes बिल्कुल आप आइए। राइट, और अगर आपको डाउट भी है तो यू कैन जस्ट join the प्री किक ऑफ सेशन, वहां पे आपको एक एज भी मिल जाएगा। जनरली हमारे प्री रिजल्ट में, मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूँ सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। तो वी डू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट टू अ नेक्स्ट लेवल। राइट, मतलब अगर आपने होमवर्क नहीं करके आए तो आपको मिलेगा डंडा। आ हा हा, सर क्या बात कर रहे हो सर, आप हमें डंडा दोगे? अरे ये लीजिए, देखिए ये हमारे पिछले साल की प्री रिजल्ट बैच के डैशबोर्ड है। थोड़ा सा भी चेंज हो गया होगा, बट ठीक है, दिस इज हाउ वी मॉनिटर योर परफॉर्मेंस। पूरी जन्म कुंडली आपकी बनती है यहाँ पे। आप कहाँ से हो, कौन से शहर से हो, पूरी कम्युनिटी बनती है, आप इनसे कनेक्ट करिए। ठीक है, आपकी रैंक क्या है इस बैच में? राइट, आपका परसेंटाइल क्या है? दिख रहा है? राइट, आपका रैंक क्या है, परसेंटाइल क्या है? राइट, आपने रिज्यूम कीवर्ड सेशन किया कि नहीं, ईमेल सेशन कंप्लीट किया कि नहीं, वर्सन टेस्ट दिया कि नहीं, टीम टेस्ट में आपका क्या स्कोर है, नौकरी सेशन आप देख रहे हो कि नहीं, नौकरी प्रोफाइल अपडेट हुई कि नहीं। राइट, और ये सब बहुत एज मिलता है, क्योंकि क्या देखो, साथ में करते हो ना, तो खटाखट 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 कंप्लीट होगा। खुद से करते हैं तो अरे यार कल कर लेंगे। यहाँ कंपटीशन होता है भाई, डैशबोर्ड में फर्स्ट आना है अपने को। राइट, वो लगता है कि नहीं अपन को फर्स्ट आना है बिल्डू, क्योंकि या टॉप 10 में रहना है। अगेन नेक्स्ट होता है फिर टीम अलोकेशन। नाउ इफ यू कुड सी, हर एक ग्रुप टीम में डिवाइड होते हैं। अब अलोकेशन भी कैसे होता है, तो लेट मी जस्ट ऑल्सो शो इट टू यू। जैसे टीम 1 की बात करता हूँ, तो टीम 1 में 25 लोग हैं, बहुत मजा आता है। अब देखो हमारा अलोकेशन कैसे हुआ है, पूरा डाइवर्सिटी है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, पूरा भारत के लोग हैं तुम्हारी टीम में। अब यू डोंट हैव अ चॉइस, यू ओनली हैव अ चॉइस टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज यू आर पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया। ठीक है, अब कोई बोलेगा लिटिल स्लो इन इंग्लिश गया, राइट, तो अगेन यू नीड टू वर्क, है ना। अब इसमें भी आता है कि भैया टीम टेस्ट में कौन पापी है, अब ये बंदा भैया कर ही नहीं रहा है होमवर्क। अब इसका टीम लीडर होगा, तो टीम लीडर उसको डंडा मारेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, नाम खराब कर रहे हो हमारी टीम का। तो अगेन यहाँ पे फिर उसको परफॉर्मेंस में आता है, टीम परफॉर्मेंस। इस पे भी फीडबैक होता है बहुत ज्यादा कि भैया व्हाट व्हाट द हेल योर टीम इज डूइंग, है ना। तो टीम 1 जीत रही है, टीम कौन सी टीम है, टीम 7 एकदम खराब है, तो टीम 7 को फिर डांट पड़ेगी सबके सामने। तो अगेन इट्स अ ग्रेट फन, इट्स अ प्योर बी स्कूल कंसेप्ट व्हिच यू हैव ट्राइड टू बॉटन। इट्स मोर ऑफ अ कॉलेज लाइफ, यू विल गेट इट। ठीक है, यस, करेक्ट आंसर वाज 16। ठीक है, एस सेमी क्वालिफाइड दुबई में जॉब मिल सकती है क्या? हाँ, दुबई के लिए दोस्त मैंने, है ना, 1.5 घंटे का अलग से वीडियो बनाया, यू जस्ट सी इट आउट, यू कैन जस्ट, दैट इज गोना बी देयर फॉर यू। सर शुड वी ज्वाइन फुल टाइम वर्क? शुड वी ज्वाइन फुल टाइम वर्क? अगर देखो अच्छा मिल रहा है एंड द डोमेन इज गुड इनफ, यू कैन गो देयर। समवन इज सेइंग सर प्री रिजल्ट ज्वाइन करेंगे पोस्ट रिजल्ट? मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ प्री रिजल्ट, बिकॉज एज मिलता है, प्लस एक और आपको स्टेटिस्टिक्स दिखा सकता हूँ। राइट,
एक सेकंड दो, मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ। आपको डेमो दिखाना पड़ता है यार बार बार। जैसे कि इफ यू कुड सी, राइट, एक सेकंड, I'll just show you the statistics which will help you to understand what differentiation if it creates if you do the same thing pre-result and post-result. पोस्ट रिजल्ट में जनरली थोड़ा सा बैच साइज भी बड़ा होता है, दैट इज फर्स्ट, दैट इज अ फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू। सेकंड, आप ये देखिए स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ चलो आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। ये पीडीएफ है जहां पे मैंने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट का डेटा डाला है, हमारे स्टूडेंट्स का, और इफ यू कुड सी, ग्रीन वाले वो बच्चे हैं जो प्री रिजल्ट के हैं, और जिसमें कलर नहीं है वो पोस्ट रिजल्ट के हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, राइट, दिस इज समथिंग, पोस्ट रिजल्ट में देर आर 3x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू प्री रिजल्ट, तो प्लेसमेंट भी 3x होना चाहिए जल्दी, राइट। जनरली उनके प्लेसमेंट्स बाद में हुए हैं। जितने भी प्री रिजल्ट वाले बंदे हैं, राइट, वो काफी ज्यादा एज लेके आगे बढ़ गए। जैसे एक और स्टूडेंट का नाम बता रहा हूँ, मधुर। मधुर हमारा स्टूडेंट है, प्री रिजल्ट बंदे को क्लियर हो गया था प्री रिजल्ट में, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बंदा निकल गया दुबई, राइट, वो प्लेस हो गया दुबई में भाई, ठीक है। तो ये एक एज मिलता है आपको, आपके माइंडसेट थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है, राइट। वही चीज रिजल्ट की बात करोगे, अगेन कंपटीशन है, उतना टाइम नहीं मिलेगा आप स्केलिंग के लिए। नेक्स्ट, लास्ट टाइम आपने बोला था फ्यू सिटीज आके फिजिकल प्रिपेयर करेंगे, तो लास्ट टाइम हम वी डिड, राइट, वी डिड आई थिंक पुणे, मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर, राइट। We had an interview tomorrow for post of accounts department and hospital. What should I prepare? Finance का मेरा मटेरियल आप रेफर कर लीजिए प्लीज। दिस टाइम कोलकाता, हाँ बिल्कुल कोलकाता आएंगे बेटा, सपरिवार आऊंगा मैं भी, टेंशन मत लो, राइट। कुणाल कह रहा है ज्वाइन GR67, बिल्कुल मिलेंगे, मजा आएगा। सर अगर कोई आर्टिकलशिप के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहे तो उसे भी यूजफुल होगा, बिल्कुल, राइट। लास्ट टाइम हमने आर्टिकलशिप वालों को भी बुलाया था, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। थोड़ा सा सेशन हेवी रहेंगे बट डेफिनेटली लव इट। सर इफ वी ज्वाइन एनी फॉर्म सो दैट आई कुड ऐड इन माय रेज्यूमे, हाँ तो फॉर्म मैंने इसलिए ज्वाइन करने बोला था क्योंकि अगर सीवी में गैप रहेगा तो वहां से यू कैन गेट एन एज, तो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन डू। एआई बॉट में कॉइन्स चाहिए ना कम्युनिकेशन के लिए, हाँ जी, एआई बॉट में कॉइन्स चाहिए, राइट। 100 कॉइन्स वी गिव इट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, जिससे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-3 बार कर सकते हो, उसके बाद आपको रिचार्ज करना होगा। जीआर में आते हो तो 500 एडिशनल मिल जाते हैं, तो 600 कॉइन हो जाते हैं, 100 फ्री में मिलते हैं और 500 और, तो दैट इज व्हाट इट इज। 24th को बेटा मीटअप कहाँ है बेटा, मीटअप नहीं है बेटा, नेटवर्किंग इवेंट है ऑनलाइन जूम पे। हाय हाय हाय, वो बेचारा मीटअप के चक्कर में जा रहा है, मुझे समझ रहा हूँ तुझे किससे मिलना है बेटा। हाँ, विच इज द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग डोमेन एज ऑफ नाउ। हाईएस्ट पेइंग डोमेन बोलूंगा तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा, बट उधर जाने के लिए मेहनत भी उतनी है। द हाईएस्ट पेइंग डोमेन इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट प्लेस इन टू बैंक ऑफ अमेरिका, मैं नाम नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ अ कॉन्फिडेंशियलिटी इशू। आई शेयर इस पैकेज, इस पैकेज इज 45 लाख फिक्स्ड प्लस वेरिएबल गोज अप टू 100%, ठीक है। बट अगेन ही वॉज नॉन रैंकर, बट उसका सीवी बहुत स्ट्रांग था। ही वॉज SRCC ग्रेड एंड EY आर्टिकल, बट उसका पैकेज 45 लाख का गया था, ठीक है। फैक्ट है, मार्केट में है, काफी कम लोग को पता है ये चीजें, बट अगेन दिस इज ऑफ अ कॉन्फिडेंशियलिटी। ही गॉट प्लेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एन MBA, राइट, उसका सीवी बहुत अच्छा लगा और ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, so that is why I got placed there. सर डोमेन शुड बी सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ मनी, अगर पैसे के बेसिस पे ही सिलेक्ट कर रहे हो तो आप कुछ समय तक खुश रहोगे, उसके बाद पैसे को क्या करोगे बेटा, आफ्टर फ्यू इयर्स डेफिनेटली यू विल नॉट बी हैप्पी, तो फिर कोई काम का नहीं है ना। तो यू नीड टू सिलेक्ट इट बेस्ड ऑन वट एवर पैशन यू हैव, राइट, बिकॉज अगर आप मेरे सेशन भी देखोगे तो आई एम रियली इंटरेस्टेड और मैं एकदम एक्साइटेड रहता हूँ जब भी मेरी क्लास होती है, तो वो पैशन आपको ड्राइव करेगा। सर प्री रिजल्ट करेंगे, पोस्ट रिजल्ट आई कवर्ड इट आउट। आई एम नॉट एबल टू चूज GR इवनिंग और मॉर्निंग, एनी आई एम नॉट एबल टू चूज इवनिंग बैच, इज देयर एनी ग्लिच इन वेबसाइट। पायल एक बार रिलोड करके ट्राई करिए, और रंजित एक बार आप कनेक्ट कर लीजिएगा पायल से, उन्हें कुछ क्वेरी आ रहा है, राइट, और टुमारो यू कैन कॉल आवर सपोर्ट टीम, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Yes, call us on सर support. We will be helping you. ठीक है, नाम लिख लीजिए एक बार रंजीत आप। हाउ वी कैन अपियर फॉर प्री रिजल्ट इंटरव्यूज और प्लेसमेंट्स,
We have created a group of November 24 CA. There I would request you to join in. Second, हमने एक बहुत ही शानदार काम किया है, right? That is, we have created the one of the largest India's community for finance job vacancies, guys. भारत की सबसे बड़ी जॉब वैकेंसीज का हमने एक ग्रुप बनाया है, जहां पे करीबन 14 से 15,000 लोग हैं, जहां पे एवरीडे 5 to 6 नई वैकेंसीज आती है सबसे पहले मार्केट में, जो हमारे ग्रुप पे डलती है। क्या आप बात कर रहे हैं सर? रंजीत, एक बार हमारे फाइनेंस कम्युनिटी ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट द पीपल कैन आल्सो जॉइन इन, Posting it. Yes. राइट? काफी सारे हमारी वैकेंसीज आती रहती हैं वहां पे, राइट? ऑल द बिगेस्ट अपडेट एंड ऑल द वैकेंसीज व्हिच कम्स related to finance comes here in our group. It is BCom, MCom, MBA, ACCA, CA, CFA, CS, right? Anything related to the finance, उस ग्रुप में वैकेंसी आपको मिल जाएगी, ठीक है सर? GMCS एडवांस वर्जन है क्या ये GIR? हाँ हाँ हाँ, आप प्री किक ऑफ में आइए, आप खुद ही जवाब देंगे कि ये क्या चीज है, राइट? ठीक है, अभी मैं पब्लिकली रिकॉर्डिंग पे नहीं कह सकता इसे, बट आप खुद इसको फील करेंगे. Sir, as you mentioned, we can join a firm near to gain an exposure in a field interested to pursue after qualification, since the duration of our stint is very small. अभी जैसे कि I think just few minutes ago, I think I just saw one of the vacancy posted by, I don't know if it is posted by our team or what, but there is a vacancy in Deloitte USI, which is again posted by our team itself, where the company is hiring for tenure for 3 to 4 months. अभी फाइनेंस ग्रुप का लिंक आया, अरे जाइए, अरे जाइए जी. हाँ देखिए, वहां पे 3 से 4 महीने का आपको टेनवर बेस्ड हायरिंग है. ऐसी काफी सारी हायरिंग्स आपको मिल जाएगी, राइट? मनीषा जी और रमन जी, आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे मुझे नहीं पता, बट अगेन इसका ज्वाइनिंग लेट है. अब यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग लगेगी, बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड वैकेंसी एंड दे विल बी हायरिंग. तो जनवरी में ज्वाइनिंग है आई थिंक इसका, एंड यू कैन जस्ट लिवरेज दैट आउट एज वेल. सर प्लीज कोई प्रोमो कोड दे दीजिए. बेटा कोई प्रोमो कोड नहीं है मेरे दोस्त, राइट? लास्ट डे ऑफ द बैच यू विल से दैट एनी डे एनीवेज इट्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, तो कोई दे से ये प्रोमो कोड नहीं है. Sir, can you tell about a different domain and opportunities after qualifying? Yes, my friend, we have a separate session on the same. I think it's on 22nd or 21st. Just check it out. Okay. I've registered for the batch. Any joining prerequisites which is done? Just you need to take a printout of batch notes. We'll share the updated batch notes which is there. Baki, you need a laptop. That's it. How to cover post articleship gap of a 2 year, right? इसके लिए definitely will cover it out in a very detailed manner. But अभी के लिए just give you a short idea. You can cover it via certificate. सर्टिफिकेट मतलब कुछ कोर्सेज करके, जैसे सिमुलेशन करेंगे हम उससे हो जाएगा, मास्टर क्लास करोगे उससे हो जाएगा. सेकंड, कोई सीए फर्म ज्वाइन करे अभी उससे एक एज मिलेगा, राइट? थर्ड, आप कहीं से दैट इज 1 or 2 places you can try it out. शुड आई ज्वाइन द फिक्स टर्म टेन्योर? बेटा ज्वाइन क्या, पहले ऑफर ले लो फिर सोचना ज्वाइन की नहीं, ठीक है? ज्वाइन उसने मतलब अज्यूम कर लिया मेरे को डेलोइट यूएसए का ऑफर लेटर ला गया और वो बोल रहा है मैं ज्वाइन करूँ कि नहीं. अरे भाई अभी इंटरव्यू ही नहीं हुआ. हरीश, बेटा हरीश, सर शेयर द कॉन्टेक्ट डिटेल्स वेयर वी कैन कॉन्टैक्ट बिफोर ज्वाइनिंग द बैच. रंजीत एक बार सपोर्ट का नंबर डाल दो चैट पे, विच इज देयर. सर 25th को बैच चालू होगा, 8 दिसंबर के आसपास खत्म हो जाएगा. आईबी रोल दुबई में भी अवेलेबल है, बैंगलोर में भी मीटअप करेंगे बेटा. 24th का ज्वाइनिंग, इवेंट ज्वाइनिंग के लिए आपको जाना है tools.cmong.com/events, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. हाउ आई कैन कॉन्टेक्ट यू? रिया जी पूछ रही है. बेटा हमारे रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं हमारे बैचेस के और कम्युनिटी के, राइट? हर दूसरे तीसरे दिन आपको सेशंस होते हैं, तो आपको अपने आप मेल आ जाएगा, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. डोमेन का मैंने बता दिया. वेरी नाइस सेशन, थैंक यू. टुमारो इज नो सेशन, डे आफ्टर टुमारो वी हैव अ सेशन. लिंक किस चीज का बेटा? लिंक कौन सा लिंक नहीं मिला? अच्छा फाइनेंस ग्रुप का रंजीत ने डाल दिया क्या? फाइनेंस, हाँ डन इट, चेक करो. ठीक है, डन डन डन. कोई लिंक मिस आउट हो जाएगा तो डोंट वरी, एवरी लिंक विल बी अपडेटेड ऑन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन गाइस फॉर यू. वहां से आप As जाइए. well as और on community, you will find November 24 CA community. तो यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, जो यूट्यूब की जनता है, राइट? वहां पे आपको दिख जाएगा ज्वाइन आवर फाइनेंस कम्युनिटी फॉर रिसोर्सेज और अपडेट. वहां पे आपको मिल जाएगा, इवेंट्स का भी डिटेल मिल जाएगा, जीआर बैच का भी डिटेल मिल जाएगा, एंड एनीथिंग व्हिच इज नीडेड इट्स कवर्ड देयर. ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द डाउट्स, राइट? स्टिल यू हैव एनी मोर डाउट्स और क्वेरीज? आई नो यू हैव लॉट ऑफ मोर डाउट्स. डोंट वरी, वी हैव अपकमिंग सेशन डे आफ्टर टुमारो, दैट इज समथिंग यू कैन जॉइन इन.
Second, you can post your doubts in the YouTube YouTube comment section. I'll be happy to respond it out from there. Garima ji, don't worry, tension nahi lene ka, just chill, right? And third, very interesting thing, right? I'll be really happy to see all of you guys in our pre-result batch. काफी एज मिलता है, राइट? और काफी आपका सीवी भी ट्रांजिटेंट हो जाएगा, काफी ज्यादा आपको रेफरेंसेस, नेटवर्किंग, राइट, एंड गाइडेंस एंड मेंटरशिप विल गेट इट आउट थ्रू दैट बैच एज वेल. ठीक है? So see you guys in upcoming session, which is on 28th, which is one of the very interesting session, which is related to management consulting, what management consulting is and how you can go there. And we'll solve one of the case study, which is again going to be a live event. Then on 21st, domain-wise guidance and IB session on 22nd. Till then, bye-bye, take care, stay safe, and all the best. Bye, guys. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.